Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you viewers wherever you are across the globe. Here we go. The wait is over. The first semi-final, the big one we have got in our hands. DHA Dabangs are taking on Malir Malangs all the way from DHA Sports Club Moin Khan Academy. And the news from the center has been that DHA Dabangs captain Yasser Mushtaq has won the toss and opted to bat first. Right then, we are all set for the first semi-final of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Here we go. Nicely bowled and respect earlier on given by Waqas Sher. Semi-finals first hit in front of your eyes, and it's a high one. Oh my goodness gracious me, you gotta be kidding me. Too many butterflies under the ball and none of them could catch the ball. What's going on? A genuine chance by the fielder to catch this one. He doesn't need second invitation, I tell you what. It's gone for 4, 1 bounce, but he's used that pace of Majid Goli. There you see, this time he's got hold it, and he's got plenty of it because it's 6 over square leg. First one by Khurram Shehzad. Goes through the offside. How good is that? What about the timing and placement? Khurram Chakwal, you little beauty. Oh my goodness gracious me. You gotta be kidding me. It's all about the timing. Nearly hit our cameraman down there. It's gone for the maximum. You won't see a better stroke than this. It's gone over whitish long on for yet another maximum. It was flat and it was long. My word, this guy is unstoppable tonight. Well, this time it's Waqas Sher who is in the air, and 1 bounce into the boundary for 4 over extra cover. There you go. He's good there. He's good everywhere. 1 bounce into the boundary. Didn't get entirely out of the screws, but still manages to get up 4. Because his partner is unstoppable tonight. This is Khurram Chakwal's night, I tell you what. On 47 with that 6. Hammers it down the ground all across the turf. It's in the gap between long on and mid wicket. DK himself standing there at long on. It's just going to be a single. Talking about Malir Malangs, well, after the first 5 games, they were leading the points table. As we see, 50 comes up for Khurram Chakwal. 50 of just 15 deliveries, and he can raise the bat to the dugout. Starts off with a short delivery. That has been nailed over square leg. That's going to go all the way for 6. That has been the story of the innings so far. Goodness me, how clean is this? It's a long hit from Khurram Shehzad. Slower delivery. Wow, that is a very good hit. That is still in the air, and finally it has landed, but way beyond the boundary ropes. It's length. And when you bowl length to a guy of that caliber, that ball is going to disappear. Bad delivery. Juicy length offered to Khurram Shehzad and beautifully put away. It's short, it's wide. This time it's Choda Wiki who has deposited that ball over the side screen. That's a magnificent hit once again. Fuller in length once again. Khurram Chakwal has just smashed that ball over long off. Wow, that is some hit. Juicy ball, over pitch, outside the off stump. He has absolutely launched it, and launched it in a magnificent fashion. Quartered away on the leg side. There is a fielder out there in the deep. They will definitely look to come back for a couple of the last ball. And the wicket keeper couldn't gather the ball. Plenty of damage has been done, and Malir Malangs did not pick up any wicket. 118 for none. It's a marathon performance. It's a huge performance from
DH Dabang in the semi-final. और इस बार कादिर कश्मीरी का गेंद ब्लॉक होल्ड में मिला। मिमरान जिनकी शानदार फॉर्म जारी है, शानदार छक्का। बॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मिमरान का उतना ही शानदार स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए सामने की जानिब। ये ले जी, करो तेज गेंद। क्या जवाब दिया है यहाँ मिमरान खान खटक ने। इस बार गेंद मिल गई रडार में जहां चाह रहे थे मिमरान। मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स। ए बॉल में इसको कहते हैं, बिल्कुल मुंह में दे दिया। और बोल्ड कर दिया, जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। अगर ठीक है पहली गेंद पे आप बच गए, लेकिन दूसरी गेंद पे नहीं बचेंगे। दाऊद खान पठान। डीके गॉन फॉर 7, 28 पे 1। और फौरी बैकफुट पर गए और ऊंचा शॉट खेला, बट शानदार कैच लॉन्ग ऑन पर। एक वक्त में हवा में उछले, बट बॉल को हाथ से जाने नहीं दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेटें दिला दी यहां पर। पेस बहुत अच्छा था और कैच भी उतना ही अच्छा था। करें आप कादिर कश्मीरी की तारीफ बनती है, लेकिन खुरम चकवाल की भी क्या बात है। कलीम 0 पर आउट। मतलब यॉक करने की कोशिश की है, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट एज एन एरो, और बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। पावर मौजूद थी तो 4 रन। बोल्ड कर दिया। इस मरतबा हसनैन की बड़ी अच्छी गेंद और मुख्तार के पास उसका कोई जवाब नहीं था और क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह से एक और विकेट गिर गई है। मुख्तार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। हसनैन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। 6 रन। जी हाँ, जितनी तेज होगी उतनी ही तेज दूर तक जाएगी। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर। शॉर्ट राइजिंग बॉल, इस मरतबा पुल या हुक करने की अटेम्प्ट थी उनकी, मगर गेंद को एज कर बैठे हैं विकेट कीपर यासिर मुश्ताक के हाथों में और वापस आ रहे हैं आउट होकर। जी हाँ, ये स्लो बाउंसर थी और थी तो खासी ऊंची, लेकिन इतनी स्लो थी कि टाइमिंग सही नहीं हो सकी। 30 रन बनाकर मिमरान आउट हुए। 55 पे 4। नए बैट्समैन उबैद सामना कर रहे हैं और उबैद ने पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से लॉन्ग ऑन पोजीशन पर खेला है। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर। उछलकर उन्होंने अपनी जंप को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। अगली गेंद एक मरतबा फिर ऊंचा खेले है। क्या 600 का स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा, देखना होगा। गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। एक और छक्का। स्ट्राइक रेट 600 का बरकरार। 2 गेंदों पर 12 रन। और इस गेंद को ऑन साइड में हिट करने में तो कामयाब हुए, मगर काउ कॉर्नर से फील्डर ज़रा वाइड में डाउन की जानिब आए। दूसरे रन के लिए बैट्समैन पहुंचने में क्रीज में अपनी कामयाब हो गए। अंपायर ने बॉलर से गेंद ली और इस तरह 6 ओवर्स के बाद 74 रन 4 विकेट पे बनाने में कामयाब हुई मलीर मलंग्स। 44 रन की लीड उन्होंने कंसीड की है डीएचए दबंग्स को। यानी डीएचए दबंग्स जब अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू करेंगे तो 44 रन के फ़ायदे के साथ या सबकत के साथ आएंगे, जो कि यकीनन काफ़ी बड़ी लीड है। Welcome back once again from DHS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi, where UPL being KTPL Season 3 is going towards the end, and the first semi-final is being played between DHS Dabang and Mali Malangs. And overall, DHS Dabang dominated so far, and they got a lead of 44 runs. It's a healthy lead in the first semi-final, so it's all set. First ball of the new innings. Outside the off stump, they try to chase it initially.
Wide given. Big shot, land ball, put away in style. What a wonderful blow. Goodness me, how good is that from Chota Vicky? Out, could be out, could be out. Oh, he's dropped it. It was a tough one from toe end of the bat. And the fielder dived forward. It was never easy. I think he's hurt himself. And his Cummins in innings in style. It goes for 6, I guess. It's a flat one. Beautifully timed. That was some shot. Wrist work was there. It goes offside. Chota Vicky. One bounce into the fence for 4. What a start that is. Pulled away, not quite off the middle. Should be a boundary. 4 more. Runs are flowing here for DH Dabang. Big full toss. Has it got enough length? Should be taking it long off. No mistake. So finally wicket falls. Full toss. Hit high on the bat. No timing at all. And Chota Vicky has to walk back. Waqas Sher went for 25 on 11 deliveries. 50 for 1 DH at the bunks. Oh, goodness me. 2 men are converging. Chance or 6. It's over the rope. What a way to begin the innings. Arsalan, the man in form, as I mentioned, picked it up from outside the off stump to pick up half a dozen. He goes again over long off. 6 more. Comfortably over the holdings. Terrific batting from Arsalan. Yes, he got that away and got that away in style. And it has gone for 6. Magnificent batting. Again, it is in the air. And I think it has come down right in front of our commentary box. Wow, Arsalan is absolutely having a go at everything. This one is hit away and hit away beautifully for a beautiful 6. कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के सबसे इम्पोर्टेंट डे पर आप तमाम लोगों को डीएचएस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से खुशामदीद कहता है। मैं इसलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट डे करार दे रहा हूं कि 3 साल से इस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, लेकिन आज हम एक नए लेवल पे जा रहे हैं। आज एक नया प्लेटफॉर्म सेट करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज जो ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा कि जहां पर डीएचए दबंग की टीम सामना कर रही है क्लिफ्टन पॉपुलर का, वहीं आज हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्चिंग होने जा रही है जिस सिलसिले में आज हम आपसे मुखातिब हैं। आज कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की अब विमेंस लीग स्टार्ट होने जा रही है, विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी विमेंस बहुत तेज़ी के साथ कामयाबी का सफ़र तय कर रही हैं। अभी रिसेंट पास्ट में अगर हम देखते हैं तो फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में ओडीआई T20 सीरीज़ जीती, और ये दुनिया की बहुत कम टीमों को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने जाके न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ जीती। इसका मकसद है कि टैलेंट मौजूद है, लेकिन हमारा पूल बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, जिस पूल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था। ये वुमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक बड़ा संगे मील भी साबित हो सकती है। इस सिलसिले में आज एक एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा है कि जिसमें कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग पावर गर्ल्स सामना करेंगी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग क्वींस का, और ये दोनों टीमें उन विमेंस क्रिकेटर्स पे मुश्तमिल हैं कि जो डोमेस्टिक सतह पे कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म वो बच्चियां जो दिल में तो क्रिकेट रखती हैं लेकिन शायद कभी हार्ड बॉल से डर जाती हैं या शायद किसी और वजह से वो इस जानिब आ नहीं पाती, लेकिन जब ये सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट आपको मिलेगा जिस जगह पे UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का इनेकाद किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में एक रुझान बढ़ेगा। खैर, आज मैच तो आप देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात जो इस
वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं, जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है, जहां वो आइडियाज़ कर रहे हैं, जहां वो पाइमेक कर रहे हैं, जहां वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े शो कर रहे हैं, वहाँ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग भी अपना एक मकाम बना रहे हैं और इंशाअल्लाह वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग भी अपनी एक प्रॉपर जगह बना के उस पाइपलाइन का हिस्सा बनेगी जो पाकिस्तान को प्लेयर्स देते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, हमारी वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग की बड़ी सरगर्दा किस्म के रुकन है, लेकिन बड़ी खिदमात हैं इनकी पाकिस्तान के लिए भी। 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली कायनात इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच कायनात इम्तियाज़। थैंक यू सो मच सर। उनके बराबर में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो। इसके साथ साथ हमारी इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर जावेद मियादाद साहब की साहबजादी हैं, लेकिन ख़ुद हर शोबे में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करती हैं, मारिया मियादाद। थैंक यू वेरी मच मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, और उनके साथ हमारी जिस तरह मैंने कहा कि एग्जीबिशन मैच हो रहा है और ये लॉन्चिंग होने जा रही है वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग की, दो ऐसी क्रिकेटर्स जिन्होंने नेशनल सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और आज ये रोल मॉडल के तौर पे ग्राउंड में भी उतरेंगी। उनमें हमारे साथ मौजूद है अरूप शाह। अरूप, थैंक यू वेरी मच। और उनके बराबर में माम ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मर रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही हैं। कायनात, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। एक टाइम आपने गुजारा है ग्राउंड के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। किस तरह देख रही हैं आप फ्यूचर ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों का इस वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग के बाद? नसीम, आई थिंक कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे काम होना बंद हो गया था, दैट इज़ इंटर स्कूल स्पेशली, उसकी जगह पे हम इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो जो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल ही अब नहीं हो पा रहा काम इंटर स्कूल्स में, वी वांट के हम इंटर स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके वहाँ से लड़कियों को लेकर आएँ सो दैट वो इस प्लेटफॉर्म पे और इतने सिक्योर एनवायरनमेंट में आके खेल सकें और पाकिस्तान को डेफिनेटली एक दिन रिप्रेजेंट कर सकें। ये वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। वहाँ पे हमारे साथ मारिया मियादाद भी आ गई हैं। मियादाद, क्या बात है, इस नाम की एक अलग ही टोर है पाकिस्तान में। मारिया, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे जावेद मियादाद साहब की टोर रही मेंस क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट में हम आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमने 3 दिन में आपको जिस मेहनत से काम करते हुए देखा, ऐसा लग रहा है कि जावेद भाई ग्राउंड में मेहनत करते थे, आप बाहर बैठ के बहुत सारी चीज़ें मैनेज करेंगी। कैसा फ्यूचर देख रही हैं वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग का? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि एक स्टार्टिंग पॉइंट अब हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं फॉर वुमेन स्पेशली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो भी लड़कियाँ जो दिलचस्पी लेती हैं क्रिकेट खेलने में, उनके पास एक फैसिलिटी नहीं होती, एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती जहाँ से वो अपनी करियर शुरू कर सकें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लीग, बिकॉज इसमें आई फील लाइक कि जितनी भी लड़कियाँ अगर उनको सेफ़ इन्वायरमेंट मिलेगी, एक अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो ऑब्वियसली दे विल गो वेरी फार। आई फील कि ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी फैसिलिटीज़ बेस्ट होंगी तो आपके प्लेयर्स भी हाइट ऑफ देयर करियर पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये देखते हैं कि अब अरूप शाह क्या कहती हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि हार्ड बॉल से क्रिकेट खेली इन्होंने। बचपन में कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेली। अरूप, क्या समझती हैं आप इस टेप बॉल क्रिकेट लीग के ज़रिए हमारी बच्चियाँ ग्राउंड में लाने में कितनी मदद मिलेगी? हार्ड बॉल से बहुत सारी डर जाती हैं। जी, सबसे पहले तो KTPL ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है यंग गर्ल्स के लिए, और जो आना चाहती हैं क्रिकेट के लिए उनको एक मौका मिलेगा कि वो आएँ, क्रिकेट खेलें और उनका शौक़ बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ये कि ऑब्वियसली हर कोई क्रिकेट जो है वो टेप बॉल से स्टार्ट करता है, वो तो स्टार्टिंग होती है। तो ये कि जब यहाँ से लड़कियाँ देखेंगी और हम लोगों को खेलते हुए देखेंगी तो उनको भी शौक़ बढ़ेगा और वो चाहेंगी कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने या फिर वो हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। महम, आप ऐसी ज़बरदस्त किस्म की आप बॉलिंग करती हैं, आप क्या समझती हैं कि बहुत सारे लोग बात करते हैं जहाँ कोई बाउंसी ट्रैक आ जाए तो वहाँ पर अगर आप टेप बॉल से प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी होती है। ये टेप बॉल क्रिकेट पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट को कुछ सपोर्ट कर सकती है?
आई थिंक बिल्कुल सबसे पहले तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो KTPL ने ये स्टेप उठाया है कि वो वुमेंस लीग भी करा रहे हैं एंड ऑल ऑफ अस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड हैं और स्पेशली जहाँ पे टेप बॉल की बात आती है वहाँ पे शुरू से ही हर कोई टेप बॉल से क्रिकेट स्टार्ट करता है। हम सब ने टेप बॉल क्रिकेट से ही स्टार्ट किया, फिर हम लोग हार्ड बॉल क्रिकेट में गए। तो आई थिंक टेप बॉल का जो ये इनिशिएटिव है इससे हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम और जो हमारा सर्कल जो आपने बात की है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। बहुत लड़कियां आएंगी, प्रॉपर टेप बॉल खेलेंगी, उनको कोचिंग मिलेगी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और इसको जैसे KTPL ने स्टेप लिया आई थिंक बाकी लोगों को भी दे शुड कम फॉरवर्ड और इस तरह का टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए लड़कियों के लिए। ये इनिशिएटिव ले लिया है पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने। ये इनिशिएटिव ले लिया है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की पूरी मैनेजमेंट ने कि अब अपनी वुमेंस क्रिकेट को भी तगड़ा करना है। और जो ये तारीखी और एग्जीबिशन मैच होने जा रहा है तो उसका टॉस रेडी है। दानिश अनीस, इट्स ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत आपका। So ladies and gentlemen, are you ready for the grand finale of UBL Amin Karachi Tape Ball Premier League Season 3? But that's happening later on in the night. Before that, we have an exhibition match, as Naseem Rajput told you all, to be played between KTPL Queens and KTPL Power Girls. Now we are all set for the toss. I have both the captains here with me. Leading KTPL Queens is the captain Ramin Shamim. Leading KTPL Power Girls is the captain Javeria Rauf, along with match referee Naeem Ahmed. I believe is Javeria Rauf who has the coin. Javeria, flip it. Here it goes. KTPL is the call. It is KTPL. देख लिया? It is KTPL. Ramin Shamim has won the toss. Ramin, क्या करने का फैसला किया आपने? पहले हम बॉलिंग करेंगे। पहले बॉलिंग करेंगे। नाउ आपके सामने KTPL पावर गर्ल्स है। बार-बार मेरे दिमाग से पावर पफ गर्ल्स निकल रहा है। But I'm sure they're a strong unit. So you ready for them? Yes, I'm ready और मैं अपनी टीम को भी काफ़ी मोटिवेट करूंगी क्योंकि दोनों टीम बैलेंस है। ऐसा कहना नाजायज़ होगा कि एक टीम स्ट्रांग है, तो दोनों टीम बैलेंस है। Right, Ramin, best of luck for the match. All right, Javeera Rauf, they're bowling first. आपको पहले बैटिंग करनी है, but टेप बॉल क्रिकेट में आप उस दिन उन ओवर्स में जिस हिसाब से खेलते हैं वो मैटर करता है। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए हम लोग। अपनी टीम के कॉम्बिनेशन से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, बहुत अच्छी टीम बैलेंस है हमारी, इंशाल्लाह अच्छा टोटल पुट अप करेंगे। All right, ladies and gentlemen, you heard it here on Geo Super. The word from the center is KTPL Queens have won the toss and decided to bowl first. We'll take a break here and we'll come back with live action. In fact, we're not taking a break here. We're going to Naseem Rajput. Naseem Rajput, over to you. Thank you very much, दानिश अनीस साहब। बड़ी आज हिस्टोरिकल डे है। इसमें अगर थोड़ी बहुत कोई फंबल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तारीख बनने जा रही है। वुमेन्स हमारी क्रिकेट के लिए हम एक प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए जा रहे हैं। कायनात ये जो मैच हो रहा है जहां आज क्वींस की टीम टॉस जीतने में कामयाब हो गई है, तो क्या लगता है आपको ये टीमें आपने बनाई हैं वैसे बैलेंस हैं? इतने लोग देख रहे हैं, 84 से ज़ायद ममालिक में 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने हमारी ट्रांसमिशन को देखा है। जियो सुपर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल, दबंग स्पोर्ट्स चैनल कवरेज कर रहे हैं, तो हमारी प्लेयर्स कैसी हैं? कुछ देखेंगे गेम? बिल्कुल बहुत बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की है ताकि एक अच्छा शो पुटअप कर सकें और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और अपने लेवल को जो उनका है वो पूरी दुनिया को दिखा सकेंगी। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी बात है कि 84 प्लस कंट्रीज़ में यहाँ पे जियो सुपर से टेलीवाइज कर रहा है। एंड अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय जोहेर नज़ीर फॉर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव, फॉर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट वुमेन लीग। जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू हैव अ वुमेंस लीग एज वेल। सो मुझे लगता है कि लड़कियां भी इसी एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट खेलेंगी एंड वी विल बी हैविंग अ ग्रेट गेम टुडे। चेयरमैन के साथ प्रेसिडेंट जावेद मियादाद साहब और ये ग्रुप फोटो भी आप ज़रूर देखिएगा जो आप देख रहे होंगे। ये पावर गर्ल्स जो है ना वो इस वक्त दिखाई दे रही हैं। KTPL पावर गर्ल्स आपको ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे DHA मोइन खान स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर मौजूद है। आप आए यहाँ पर आके मैचेस देखें और अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बहुत मुश्किल काम होता है विमेंस का और बच्चियों का बाहर जाके खेलना, लेकिन जितना सेफ इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है, आप आएँ और आप यहाँ पर आके इंजॉय करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मरिया को ज़रा माइक दीजिएगा। मरिया, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है। आप मार्केटिंग के शोबे को भी बहुत अच्छी तरीके से देखती हैं। एट द सेम टाइम आपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो क्या स्कोप देख रही हैं आप
बिलखुसूस आज हम देखते हैं तो UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग हो गया। पहले 2 साल बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने इसको स्पॉन्सर किया था और इसको ब्रांड बनाया था। ऑल द फ्रेंचाइजर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका अपना गोल विमेंस सेटअप के साथ। जी, मेरा गोल ये है कि मैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट करूं स्कूल्स में से, बिकॉज स्कूल्स में बहुत सारे इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं और मैं चाहती हूं कि वहां से हम लोग देख सकें, उनको सिलेक्ट कर सकें, उनको ऑफ़र दे सकें, ताकि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ वो इस जो चीज़ में उनका पैशन है सच एज़ क्रिकेट, वो उसमें भी टाइम दे सकें। तो मैं चाह रही थी कि हम सारे ये स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं जिसमें ये इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, हम उधर जाएं, उनसे मिलें, मैनेजमेंट से मिलें, फैकल्टी से मिलें, उनसे समझें कि उनके क्या क्या हेजिटेशंस होते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी हेजिटेशंस हैं जिनकी वजह से लड़कियां ख़ास तौर पे आती नहीं हैं, वो उनको हम दूर करें, हम उनको एक सेफ़ जगह प्रोवाइड करें, हम उनको फैसिलिटीज़ ऐसे प्रोवाइड करें। छोटी छोटी चीज़ें गो अ लॉन्ग वे, स्पेशली फॉर विमेन। तो मैं ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा इंशाल्लाह, तो आई होप कि मैं इन लोगों के लिए एक तरह से एक फैसिलिटी दे सकूं कि दे डोंट फील कि जिस तरह उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो लेके जा सकते हैं अपनी करियर को। नहीं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरूषा, अभी तो आप करंट प्लेयर हैं और हमारी करंट प्लेयर्स दिखाई दे रही हैं, क्या समझते रही हैं आप जो सेफ़ एनवायरनमेंट, सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी बच्चियों के लिए ये होता है, जिस तरह आप देख रही हैं, जो अरेंजमेंट्स आप देख रही हैं, क्या पैगाम देंगी? आपका कैमरा ये है कि स्कूल्स, कॉलेजेस को जो मारिया टारगेट करने जा रही हैं, जो कायनात टारगेट करने जा रही हैं, ये आपका कैमरा है, बच्चियों को क्या पैगाम देंगी आप? क्या एनवायरनमेंट यहाँ देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि स्पोर्ट्स किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको अपनी लाइफ के लेसन्स भी बहुत मिलते हैं। तो और क्रिकेट भी एक कैरियर बन सकता है क्योंकि इसका बहुत स्कोप है आगे। जिस तरह के टूर्नामेंट PCB करवाता है और फिर KTPL ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो और भी लोग इनिशिएटिव लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बढ़ता जाएगा। तो मैं लड़कियों को यही बोलूँगी कि क्रिकेट जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक वे ऑफ हैप्पीनेस है, तो ज़रूर खेलें और उसको अपना करियर बनाएं। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उनको भेजें, क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट आज हमें मिला है तो ये बहुत अच्छा है और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अ गुड कॉम्पिटिशन। बिल्कुल महम, यही मेरा भी आपसे सवाल है कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस सेफ़ एनवायरनमेंट को देखने के बाद, इन कोशिशों को देखने के बाद? आपने मेंस क्रिकेट को देख लिया कि 2 बिलियन से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 84 से ज़्यादा ममालिक में ट्रांसमिशन जारी है। फिर विमेंस हमारी कोई अच्छी आती हैं तो फिर आगे उनके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ ममालिक में लीग्स हो रही हैं कि जहाँ अगर वो हर जगह पे मौका है, जहाँ ये ट्रांसमिशन 84 कंट्रीज़ में जा रही है। नहीं, मेरा यही मैसेज है, जितनी भी लड़कियां हैं स्कूल कॉलेजेस में जो खेलना चाहती हैं, बिल्कुल वो प्रैक्टिस करें, खेलें। और स्पेशली मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें अगर उन्हें शौक़ है, उनमें टैलेंट है, क्योंकि जिस तरह की माहौल की बात की है, हम लोग इस बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है, लाइक एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत सेफ़ है। तो आई थिंक हम लोग शुरू से इसी तरह के माहौल को लुक फॉरवर्ड करते थे और आज फाइनली हमें इस तरह के माहौल में क्रिकेट मिलना शुरू हो गई है। तो आई थिंक क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ़ स्पोर्ट, और माहौल के हिसाब से भी और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी। तो आई थिंक पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच कायनात इम्तियाज़, मारिया मियादा, थैंक यू वेरी मच अरूप शाह, एंड थैंक यू वेरी मच महम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा हिस्टोरिकल डे है हमारा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट का मैं पहले दिन से हिस्सा हूँ। आज बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का प्राउड फील करता हूँ। 30 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए, लेकिन एक बड़ा प्राउड ये दिखाई दे रहा है कि मेरी मुल्क की विमेंस क्रिकेट मजबूत होने जा रही है, एक सही ट्रैक पे जा रही है, एक सफ़र शुरू हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमारी मेंस क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, वो बहुत सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी विमेंस के तो डोमेस्टिक में भी इतने इवेंट्स नहीं होते जितने मेंस के होते हैं। हम 1 या 2 इवेंट बच्चियों के कराने के बाद समझते हैं कि आप जाएंगे और जाके वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनको भी बढ़ना चाहिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक
छोटी सी पाइपलाइन अपनी भी बनाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करे। तो आज बहुत ही तारीखी दिन है और इस दिन को आप सब ने इंजॉय करना है। और जो लोग भी यहाँ करीब में, आज तो डिफेंस और क्लिफ्टन का तो मुकाबला है, तो आप लोग तो पहुँचे, आप तो यहाँ करीब में, आपकी टीमें पहुँची हुई हैं फाइनल में। जो मेंस का फाइनल 8 बजे होगा, लेकिन वुमेंस क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर पहुँचें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आप क्वींस और पावर गर्ल्स जो दोनों KTPL की टीमें जो आज स्टार्ट कर रही हैं वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग का, उनका लाइव एक्शन देखेंगे।
Bismillahir Rahmanir Rahim. Good evening. Assalamu alaikum to all of you wherever you are. And it's time for the exhibition match between KTPL Power Girls and KTPL Queens from DHS Sports Club Moin Khan Academy. And it's time to play the national anthem of Pakistan. Welcome back after the national anthem. It's been an exhibition match which is being played between KTPL Power Girls and KTPL Queens. And it's hello and good evening to Rana Ishfaq. Good evening, FS, and good evening, everyone. It was a great gesture when the national anthem of Pakistan played, and a lot of Pakistan former cricketers participated in that. Harun Rashid was there and many others were there. And it is a great step by the KTPL. And these are the two teams. These are the sides. Javeria Rauf, the captain of KTPL Power Girls. Yusra Amin. Maria Jawed, the daughter of great Javed Miandad. Loiba Fatima. Ikra Naim. Masuma Jafri. Mahak Amin. Ramsha Amir. Misha Kareem. Loiba Kareem. And Arija Hasib. And KTPL Queens are led under Ramin Shamim and Maham Tariq, Yusra Ihtisham, Sundas Siddiqui, Arub Shah, Tuba Khan, Ikra Gulzar, Kinza Wahab, Urva Said, Isha Sheikh, and Shabnam Hayat, the wicketkeeper. And earlier on, the news from the Centuries that the toss has been won by KTPL Queens and they have elected to bowl first. And remember, this is a single innings match. Each team will have to play 6 overs. There won't be any second innings in this women exhibition match. And there are few big names. I've got Javeria Rauf captaining the KTPL Power Girls. She is represented Pakistan. And there you see a lady umpire as well. Oh, good to see. As I was talking about, this is a big step from the KTPL management that they are staging a match of women here. Sohail Ahmed and Nuzhat Sultana. These are the two umpires, a lady and a gent. Yeah, for the first time in this competition, Sohail Ahmed will be officiating in the field. He's been the 4th umpire in the group stages of UBL Amin presents KTPL Season 3 and even in the semi-finals as well. Mind you, the big final is coming up after this, where DHA Dabangs are taking on Clifton Capulars. That is going to be a thriller. Indeed, it's going to be a big contest between bat and ball, and there you see the two batters going out to bat for the Power Girls, because Queens won the toss and they put Power Girls into bat. Yeah, and one thing is for sure that there are quite a few big names been representing Pakistan at international circuit in women's wing.
these goals. And these are the two competitive sides set by Kainat Imtiaz. Kai Imtiaz also representing Pakistan. Zeba Shanaz is already here. Good to see her. Now she's the artist, a very familiar face in Pakistan. Not only it is a cricket tournament, but it is a sort of an entertainment as well. And I think last 15 nights we have had everything here. Spectators turned up. We have seen number of thrillers here, and we have seen great performances by the cricketers as well. It will be an exciting game of cricket in our hands, I'm sure. KTPL Power Goals taking on KTPL Queens. Two of the very competitive sides consisting of a few recognized players. Javeria Rauf is the captain and she's the opening batter. They've been asked to bat first by Queens. Javeria, as we talked about, represented Pakistan as well. She's a right-handed batter. Then Yusra Amin, she represented the Pakistan A. She is the other opener. And I get the feeling that both of them have been playing with each other at domestic circuit. So we'll complement each other in opening the innings. It's going to be a responsibility, as is the responsibility on the captain Ramim Shamim. She's going to take the bowling, open the bowling. So there we go. It's Ramim Shamim to start the proceedings with the ball. Full toss, belted hard. There will be a protection in the deep. They will look for two and will get it easily in the end. It is very good to see that both the captains are leading from the front. Javeria Rauf started as batter and Ramim started as bowler. Good contest. Yeah, both of them have been representing Pakistan at the international circuit in women's. Launched. It's high. Does it have the distance? I don't think so. And a catch put down. That was as easy as they come, and down it goes. Yeah, that was an easy catch. It should have been taken. But as boys have been dropping a lot of catches, girls continued their tradition, and a catch put down by a girl as well. There you see, he picked that one. That was in the slot though, but he couldn't quite time it, and an easy catch dropped. Off the back foot this time, pumped it hard, didn't get out of the screws, will only be a single. So far it's been only Yusra who's been on strike, and she has got 6 runs against her name. And the other thing, these all girls do play with a leather ball, with a cricket ball, most of the time. And at times it's very tricky to play with the tape ball when you usually play with the leather ball. Probably that's what made her to drop that catch. It gets a bit tricky. Yeah, very good point you made, Rana, because it's altogether different ball game, tape ball and cricket ball. When you play with the cricket ball and all of a sudden you have to play with the tape ball, it becomes unusual. Though I believe that most of these girls have started their careers by playing tape ball. This is a big swing on the onside. And a couple of goals come around that ball. One of
her taking the ball and threw it back. In the process, 2 runs taken. When it comes to play tape ball cricket, I think everyone who represented Pakistan, doesn't matter girl or boy, they started their cricket from the tape ball or from the tennis ball. I can name many. Wasim Akram, Imran Khan, Waqar Yunus, all used to play with the tape ball. But then they represented Pakistan at big and grand stage. So it's going to be a single in the first over. Porgals have been asked to bat first after losing the toss, and they've managed 9 runs of the first over. There you see those taped balls, Osaka cricket tape, wrapped on those tennis balls, making them white cherries. And those gentlemen on your screen have been very busy wrapping the tapes on those tennis balls. Throughout the course of this competition, UBL Amin presents KTPL 3. Looks as if it's going to be a fast bowler. Maham Tariq. She's been representing Pakistan, and she's got the ball and do a job here for her side. She's relatively tall, so we can expect her to get a little bit of bounce. And though it's a tennis ball, still the bounce is going to be exceptional to watch. There you see, it started off with a shorter ball, and it falls in no man's land. Good delivery to start, surprising her with the bouncer. Yusra did try to got top of the bounce, but didn't quite get hold on to that one, but he still picked up a couple of runs. So she's playing with some bravery, I would call it. She's trying to get forward or trying to hit the ball here and there. Again, a shorter delivery, this time belted hard through the covers. This might be the first boundary of the innings. It is. That is nicely struck by Yusra. The width was given, and Yusra was pounced on that one. Watch that again. It was way outside the off stump. A, it was pitched fairly back. B, it was wide outside the off stump. All she had to do to got that one over the top of covers, which she did pretty well. That's a nice boundary, and nice to see she's playing uppish cover drive. Well, looking at the hand of Maham, I get the feeling Rana, she was trying an off-cutter there, but the direction wasn't precise. That's more like it. That's good bowling. Good comeback. To me, it is very difficult to bowl an off-cutter because this ball doesn't have any seam and doesn't have as much weight as the leather ball does. So to me, it's very difficult. So she should not trying this. Oh, my word. Down the leg side, that beats the keeper, and they scamper through for a run. So 3 runs will be added to the total. And if you want to do so, you got to be as talented as Zahir Kalia is. And you got to be at 43 years of age too. Zahir Kalia has been bowling for many, many years. Shorter one pulled away nicely, and that will go across the turf for another boundary in this over. Second one, and this time it's Javeria who gets into the act. Again, that was a bad ball, pitched fairly back and on the leg stump as well, and he pulled that away behind square leg. It has gone to the backward square leg boundary, almost went towards the long leg at the end, but nevertheless he picked up a boundary. Doesn't have enough pace to test these batters with the shorter stuff. Again, she bowls short, and this time she's get slapped in the gap. At least a couple of runs are on offer, and this is what they will get in the end.
They've got off to a good start. The Queens so far, 24 for none and 1.5 over isn't a bad effort at all. I think they're looking good. Short and wide, placed away. Good bit of fielding at extra cover. So single to finish off that Maham's over. She was expensive, went for 16. It's 25 without loss of wicket after 2. Maria Miandad sitting amongst girls, amongst cricketers. Daughter of a great Javed Miandad, who is the president of KTPL, Karachi Table Premier League. And the grand finale coming in your way as well. DHA will take on Clifton Populars. That will be a clash of titans. Big guns will be locking their horns tonight here at Moin Khan Academy. Spread outfield can be seen. Mid wicket is sent back, and there's a girl back at the backward square leg, and there's a girl going out to long on and on the offside. And we have change in the bowling. Tuba Khan has been given the ball. Yeah, replacing her captain Rameen. Full toss, hit hard. Does it have enough distance on it? Yes, it has. That is a good strike. That is as good as somebody like Puram Chakwa. Yeah, she really pumped that one hard. And here comes the drum beater. That was a very good shot. That was an easy full toss, but it still had to be put away. Oh, she almost got that one, but with the ball, she also went outside the boundary, and so was the ball. So 6 given. Full toss, slapped away, gets over cover. That's going towards the boundary. Fielder does well to cut it off. Had to cover a bit of territory, but got around it quite nicely in the end. Javeria and Yusra doing a good job. They're trying to up the ante and succeeding as well, although a couple of chances been given to them. Fielding hasn't been as good as it should have been by the Queens, particularly when you won the toss and opted to bowl first. You could have expected better fielding effort. Another full toss. She's been bowling. Oh my word! And the catch has been put down. Would you believe that? It was a dolly. Yeah, absolutely sitter. But this is what we are seeing almost every day. Not only these girls dropping these catches, but we have seen boys, lads, dropping too many catches. What do you mean? As a commentator, we have got accustomed to it? It looks like we already have got accustomed to that. That's why I didn't really shout when the catch put down. Another one is in the air. Let's see what happens. There you go. Nothing's new. Well. It's just a routine, isn't it? Dropping catches. Yeah. Again, it was there to be put away. She did hit that one high in the air. She was diving forward, almost got there. The ball did come into her hands, but then it popped out and grasped. Another full toss. This time she bent down on one knee and slapped it away and beats that diving fielder at the deep. Gets away for a boundary. She's bowling full tosses with a great generosity. I'm not quite sure why. I think out of 5 deliveries, she has bowled 4 full tosses. There you see another one. Slower, full toss, and she cut that away into the leg side for 4 runs.
Well, I get the feeling that she doesn't want to get pitch into the act. She just wants to take pitch out of the equation. And this is the best way. Bowl those full tosses. Another full toss. There you go. She doesn't want to play at this pitch. I don't know if she's happy with it or not. It's Tuba. But she went for few in her first over. 16 of them, 3 done. It's 41 for none. And now Rana Ishfaq will have a cup of tea, and I'm being joined by Danish Anis. As you can see, these are the ways, the various channels. You can watch us all across the globe on 84 plus channels. Incredible stuff, incredible job. Geo Super's special production. UBL Amin presents KTPL Season 3 going on all the way from DHA Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. Good evening and hello, Danish. Good evening, Falak Sher. While Rana Ashfaq enjoys a cup of tea, I'd like to remind everybody it's not a cup of tea filling his shoes in the com box. Oh my word. But at the moment, it's going good for power goals. They've been asked to bet. Mind you, Arub Shah will be bowling the next over. Some spin. That would be interesting. Will definitely make it even more difficult for the batter to hit it all the way. Requires a lot of strength in the shoulders and those forearms. Shorter one this time, slapped away nicely. And in the gap too. She gets herself to another boundary. Yusra. She's looking good tonight. Well, even though tape ball cricket is considered to be not as serious as the hard ball cricket, it's still very good as far as development of these players is concerned, whether it's batters or bowlers. You need a great amount of bat speed and strength to hit the ball all the way. And you need that sort of training. A very good point you made, Danish, because it gives you a lot of confidence when you start striking the ball as a player. And it's rather easy as well, in my opinion. If you start hitting this tape ball, it becomes a lot easier because it's pretty soft as compared to a cricket ball. And you can get the purchase of your stroke makings if you are good enough technically. Though it's not that often that we take care of the technique when it comes to striking the ball with tape ball, but still, I get the feeling if your head positions and your footworks are in the right directions, you have more chances to hit the ball a long way. And you'll get that today because all of these players play serious cricket. They play with the hard ball. Arub once again to Yusra. That was a genuine long hop and dealt with intelligently by Yusra for yet another boundary. Now this is a clear example of someone who bowls with the hard ball. If you are bowling with a hard ball, you can manage that arm speed much better. Since it's a lighter ball, they're banging in short. A few more matches, a little more practice, and they'll be spot on. Yeah, you're right. Either they're bowling those rank full tosses or they're bowling the long hops. Clear evidence that they are short of practice with playing this tape ball. A lot of seriousness behind the wickets. Short and wide, hit high, and comfortably over the 30-yard circle through the covers. We'll pick up couple. Running has been good. We have to admire their running so far. Poor goals, they've been fit enough. We haven't seen too many 4s and 6s yet. Yusra is on 26 of just 13. Javeria is on 22 of just 8. So these girls are going great guns at the moment. Good run rate as well, 15.45. Short and wide, could have been called wide, but she says, if it is in my arc, I'm going to have a go at it, and she's going to earn himself another boundary here through the covers. Looking good, Yusra.
That was very, very well struck by Yusra. Played it deliberately over the head of cover. Once again, it was banged in shot. She took full advantage of the fact. Had a lot of time. She could have hit it anywhere. Chose the cover region. .54 is the score for power goals at the moment. Everyone seems to be enjoying. It's been very good exhibition so far that we have witnessed. And mind you, Women Table League is around the corner, so it's only a start. It's a trailer. This is definitely a sight to behold, Falak. I'm thoroughly enjoying this. Shorter one this time. She's got hold of it. I reckon, yes. And she's got a hold of it handsomely over square leg for the second maximum, I reckon, by Yusra. The crowd loves it, so do we. And the dugout as well. That was a good stroke from Yusra. She's starting to open up now as a second six from Yusra's bat. She's been very powerful on the onside and striking the ball pretty nicely, clearing the fence by some distance. It was a good strike by Yusra. Wearing jersey number 56. Reminds me of Badar Azam. Mind you, it's going to be an 8-over match. She gets another full toss. Couldn't connect that and will be adjudicated as wide. That was flighted. We'll move on towards the sidelines where we have Kainat and Tiaz. Who do you have with you, Kainat? Thank you so much. With me is the CEO of Badar Expo Solution and the chairman of KTPL, Zohair Nazir. Sir, आप बताएं कि ये जो initiative आपने लिया है women's exhibition game कराने का, how did this idea come to your mind? देखो, ये वैसे आइडिया जो मेरे पास आया, ये मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया था because उसने वो क्योंकि स्कॉटलैंड में वो खुद से क्रिकेट भी काफ़ी एज अ पैशनेट वो खेल रही होती है कि नॉट खेल रही होती है बट वो यही है कि सबको मेरे बेटे को भी सब वो लेके चल रही होती है तो उसका यही था कि हमने बच्चियों के साथ लड़कियों के साथ हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि जिसमें हम इनके लिए एक ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्रिएट करें तो मैंने कहा ठीक है हम इंशाल्लाह इसको प्लान करते हैं और हम इसको बनाते हैं कि हम एक लड़कियों का मैच जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें और वो बच्चियाँ देखो पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि जिसमें ये लड़कियाँ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बट ये चाहती हैं कि हाँ जी हम खेलें कुछ करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से फिर मैंने फिर डिस्कस किया जावेद भाई के साथ हारून भाई तौसीफ भाई सादिक मोहम्मद तो इन सब ने मुझे कहा कि ज़ोहर इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव हम इसको स्टार्ट करते हैं और अपने जो हमारा KTPL ऑलरेडी चल रहा है उसी का हम इसको पार्ट बनाते हैं तो मैं तो ये आज मुझे इतना ही खुशी हो रही है ये मैच देख के कि जिस तरीके से ये लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं तो मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह दे कैन डू वंडर्स और मैं सारे पूरे पाकिस्तान की जितनी भी लड़कियां हैं जो इस वक्त चाहती हैं कि इस स्पोर्ट्स का पार्ट बने तो मैं उन सबको वेलकम करता हूँ कि वो सब लोग आएँ और हमारे साथ इंशाल्लाह इस पूरी लीग के अंदर जुड़ें इंशाल्लाह हम आगे फ्यूचर में इसकी 6 to 8 टीम्स बनाएंगे फ्रेंचाइजीज़ के साथ तो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट भी शो किया है कि जी ठीक है हम इसका जो हम ऑलरेडी एक KTPL पे काम कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग गेम यहाँ पे चल रहा है एंड आई एम आल्सो सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस गेम एंड होस्ट दिस इवेंट जिस तरीके का सक्सेस रहा है हमारा KTPL सीजन 3 योर प्लान्स आर टू टेक दिस इंटरनेशनल व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट देखो जहाँ तक हम इंटरनेशनल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये हमारी पूरी लीग ये ऑलरेडी इंटरनेशनल चली गई है कि जो कि हम 84 कंट्रीज़ के अंदर ये इस वक्त लीग जा रही है ठीक है तो ये हमारे लिए मतलब एक इंटरनेशनल लीग का यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि बाहर दुनिया इसको देखे तो जो हमारा टारगेट था कि इंशाल्लाह इस पूरी लीग को 2 अरब लोग देख रहे हैं तो वो यही है कि इस वक्त इस पूरी लीग को इंशाल्लाह हमने 2 अरब लोगों में रजिस्टर्ड करा दिया इस पूरी लीग बिल्कुल और यहाँ पे फाइनली एक विकेट गिरी है जो लड़की छक्के मारी थी वो आउट हुई है और नेक्स्ट बैटर इन 36 रन बना के आउट हुई है युसरा देखो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये पूरी बाउंड्री है मतलब 65 यार्ड्स की पूरी बाउंड्री है अभी जैसे इसने यहाँ पे छक्का मारा है तो ये मतलब इजी नहीं है हम तो ये समझते थे कि लड़कियों के लिए शायद हमें बाउंड्री छोटी करनी पड़े लेकिन इन्होंने तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं देख के ये तो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन चीज़ है कि जिस स्पोर्ट्स को हम लेके चल रहे थे ऐसा टैलेंट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जो हमारी
स्ट्रीट गर्ल्स को, जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट था ना कि हम स्ट्रीट बॉयज़ को स्ट्रीट स्टार्स बनाएंगे, तो आप देखिएगा कि ये लड़कियां भी इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीट स्टार्स बनेंगी इन ग्राउंड्स के अंदर आके। और आप देखना कि पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह हमारा टेप बॉल से दुनिया के अंदर एक नाम जाएगा इंशाल्लाह। आपकी एक्साइटमेंट देख के जो हाइप थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है। विद अस वाज ज़ोहैर नसीर, द CEO of Badar Expo Solutions and the head of organizing this event. So I throw back to com box. Thank you very much. Thanks a bunch, Kainat Imtiaz. Hats off to Mrs. Nazir for this wonderful idea. I'd love your autograph whenever you're here, ma'am, because it's because of you that we're witnessing this exhibition match and a league to follow. Yeah, it's going to be exciting and interesting contest. And this is what we are going to have. And that's the beauty of Yubil Amin presents KTPL. Inside edge on that occasion. Well, that dismissal, the last one of Yusra. Oh, there's a direct hit, and they're going to get another run off the rebound. Well, it's all happening. She slipped at the non-striker's end. Yusra's dismissal proved that she's an orthodox batter. A tape ball player, a typical tape ball player, would have gone on the back foot and punched it over square leg. That's the review for the run out. Resulted in an extra single for the Power Girls. And to add to that, I'll tell you one thing here, Danish. It was off the back of the bat, and normally you don't see those dismissals. It reminds me of Irfan Pathan getting out, caught behind of the back of the bat when a slow delivery was bowled by Rana Naveed when India were touring Pakistan in 2004, and he was going all guns blazing. He was promoted at number 3 as a pinch hitter, scored 64 runs, and thank God Pakistan saw the back of him. When it comes to men's tape ball cricket, you usually find unorthodox batters who play all sorts of unique shots. But when it comes to female cricketers, women cricketers, since all of these or most of these play domestic cricket, you'll find orthodox strokes being played here. Once again, safe, grounding her bat. Yeah, no problems. Green light switched on. So Javeria, the captain, is going to be on strike. Captain to captain. Inside edge. Went hard at it. It was outside the off stump. Got a thick inside edge for a single. How much more power do the Power Girls have in the dugout? Yusra played really well for her 36. Showed a lot of oomph when she was batting. It's Laiba who's replaced her. Well, it's an 8-over match, I tell you what, and we have gone past halfway mark, and they've scored 67 with a loss of only Yusra, which means that they're going good at the minute. And if they continue with the same run rate, they're going to go well past 100, which is always going to be a competitive total. I believe they're going great guns. A lot of field changes. Oh, look at that. There was a little bit of improvisation. She shuffled across the stumps and slapped it from way outside the off stump to mid-wicket for yet another single. Took a high risk for only a single. Now, this is what we'll get to see later on in the stages, especially when the league happens. You're talking about the women's league, that is. These girls will come up with the unique ideas and unorthodox shots to make up for the slowness of the pace. This time pushed away to point for another single. So Laiba is the new batter who has joined her captain. And she's on 2 of just 2 deliveries. 5 done. It's 69 for 1. And managing these unorthodox shots in this tournament while they're in a match will definitely help them. Will give them ideas how to incorporate this in hardball cricket as well. You see a lot of these shots being played in international cricket as well. Let's not forget the innings Glenn Maxwell played, standing on one leg, full of unorthodox shots. I mean, I could have sworn he was playing with the tape ball. Very agricultural, very innovative, and very successful as well. So meanwhile, it's Kinza who is given the ball. She will be bowling her first over. Right arm medium, Kinza Wahab.
Some more spin. Now that is rare. But as we've been pointing out, these girls play proper cricket. It's medium pace, in fact. You don't see express bowling from the goals. At fast, they will be at 125 or 130 clicks. But playing with the tape ball will help them increase their pace. Good idea. Oh, that was a very good delivery. Loose start. Comes up. And it's time to go downstairs and see what Kainat is doing there. Thank you so much, Falak. With me is Haroon Rashid, the former Test cricketer and Senior Vice President of KTPL. Sir, take us through the idea of this event, the exhibition women's game. देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जैसे आपको पता है कि वुमेन क्रिकेट जो है वो डिप्राइव्ड है बिकॉज वो हमारे बच्चों की तरह मोहल्ले और गलियों में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकती। तो जब ये हमने KTPL जो हमारा सक्सेस हुआ तो हमने कहा क्यों नहीं हम इस प्लेटफॉर्म में लड़कियों की क्रिकेट को भी शुरू करा दें ताकि जो वालिदैन इस बात से खौफ में रहते हैं कि बच्चियाँ पता नहीं कौन से एनवायरनमेंट में जाएंगी, तो इसलिए हमने कहा कि एक अच्छे एनवायरनमेंट पे रखते हुए इन बच्चियों को यंग एज में हम अगर पिक कर लें और उनको यहाँ से ट्रेनिंग करानी शुरू कर दें क्योंकि एंट्री पॉइंट तो हर एक का टेप बॉल क्रिकेट ही है। सो बच्चियाँ जब आएंगी, जिस तरह मैं आज देख के बड़ी खुशी हो रही है, जो एनर्जी मुझे नज़र आई है इन लड़कियों में जो बच्चियाँ खेल रही हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। सो मैं तो फील कर रहा हूँ कि ये लीग जो है वो अभी शुरू होने से पहले ही हिट हो गई है। सो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जितने भी वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों को ज़रूर भेजेंगे ये KTPL लीग में आइंदा जब भी हम अनाउंस करेंगे। और हमारा इरादा यही है कि जिस तरह ये 8 टीमें मोहल्ले के बेस पे बनी हुई हैं, लड़कियों की भी 8 ही टीमें जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और आगे जाके इस टूर्नामेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन बच्चियों के लिए जो क्रिकेट खेलने का शौक़ रखती हैं लेकिन क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इन्वायरमेंट नहीं मिलते, इसलिए उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत इंकरेजिंग है। सर, आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया कि किस तरीके का एनवायरनमेंट और इस वक्त जो क्रिकेट देख रहे हैं लड़कियों को खेलते हुए वो क्या है। एंड सर ऑफ कोर्स जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे साथ इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स अटैच्ड हैं, डेफिनेटली वील हैव ऑल द पावर। और सर मुझे बताएं कि जो ये लीग हम आगे देख रहे हैं किस टाइम पर होगी और हम कहाँ से जो है वो लड़कियों को लेकर आएंगे। देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक्चुअली टैलेंट पूल जमा करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि हमारे पास रिसोर्स क्या अवेलेबल है। अगर तो हमारे पास रिसोर्स विद इन कराची मिल गई तो पहला स्टेप हम कराची से शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमें इतलात मिली कि बाहर के जो शहर हैं जैसे दूसरे शहर हैं पाकिस्तान के, अगर वहाँ भी बच्चियाँ अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं तो जिस तरह हम KTPL में बाहर से पूरे पाकिस्तान से लड़कों को बुलाते हैं, इसी तरीके से हम बच्चियों को भी दूसरे शहरों से बुलाकर और उन्हें यहाँ ठहरा कर, और जैसे हमने KTPL फॉर मेन की है इसी तरह हम KTPL फॉर गर्ल्स करेंगे। और जो कि मैं समझता हूँ कि स्टेपिंग स्टोन होगा, ना सिर्फ ये कि वो इन बच्चियों के लिए हेल्प करेगा बल्कि PCB को भी हेल्प आउट करेगा इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। क्योंकि यहाँ आपको देखें, जिससे मैं आज देख रहा हूँ उन बच्चियों में खुद ही एनर्जी आ गई है। टेलीविज़न पे मैच आ रहा है, वो जिस अंदाज में वो खेल रही हैं, जिस अंदाज में वो फील्डिंग कर रही हैं, आई थिंक उनका वो शौक़ और बलबला देख के मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्योंकि आपको हमने इसीलिए साथ रखा है क्योंकि आप क्रिकेट के साथ इतना इन्वॉल्व हैं, आपकी भी सर्विसेज बहुत हैं। सो हम इंशाल्लाह मिलजुल के इसको एक बड़ी यादगार लीग बनाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी ये लीग। थैंक यू सो मच। विद अस वाज हारून रशीद शेयरिंग हिज विजन जो हमारी आगे वुमेन्स लीग के लिए है। आई थ्रो बैक टू द कॉम बॉक्स। Thank you so much, Kainat Imtiaz. And all of a sudden, Javeria, the captain, has gone to 36. She has a chance to get a half century for her. One hop to long on for another single. The Power Girls are at it and they're going great guns. I mean, even in men's cricket, we haven't seen 83 scored of 6 overs or less than that. We've seen scores of 72 and 75 as well. So they're matching them pound for pound. In fact, they're doing them one better. After 6, it's 84 for 1. Right then, 6 overs being done and dusted. Power goals are 84 for 1. And with that, we are going to have a change in the commentary. To tell you more about it, it's going to be Rana Ishfaq alongside Farooq Riaz. बहुत शुक्रिया फलक शेर और तानिश।
84 एक विकेट के नुकसान पे 6 ओवर से खेल मुकम्मल हो चुका है और बहुत ही अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग जारी है। और अब एक इनिंग पे मुश्तमिल ये मैच है, तो अब 2 ओवर्स बाकी हैं, तो कैसे स्ट्रांगली फिनिश करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये दोनों गर्ल्स आपस में गुफ्तगू शुनीद करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त, और रमीम जो टीम की कैप्टन हैं वो समझा रही हैं बॉलर को कि आपने किस तरह की बॉलिंग करनी है। एक बहुत ही अच्छा कदम है ये KTPL इंतज़ामिया का कि विमेन का एक एग्जीबिशन मैच करवाया जा रहा है फाइनल से ठीक पहले, और एक खातून अंपायर और एक जो है वो जेंट अंपायर के साथ अंपायरिंग भी हो रही है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। फुल टॉस, और फुल टॉसेस बड़े तवातर के साथ किए हैं इन गर्ल्स ने। यहाँ पे डाइव भी किया लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम रही। 4 रन्स। प्रेशर स्ट्रेट अवे ईशा के ऊपर है और बहुत ही ख़राब फुल टॉस आउटसाइड द लेग स्टंप, और पनिश करना बनता था, शायद वाइड भी होती, लेकिन बैटर के लिए मुश्किल होता है कि ऐसे मौक़ों को छोड़े। डाइव भी इतनी अच्छी नहीं, थोड़ी बेहतर डाइव हो सकती थी, और अच्छा खास इस ओवर का। ऐसे मैंने कहा कि पावर गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पे 25 से 30 रन और लें और अच्छा हदफ सेट करें KTPL क्वींस के लिए। इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुई हैं, स्ट्रेट बिल्कुल। जब तक गेंद को रोका जाएगा 1 रन मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि एक ही इनिंग्स का ये मुकाबला है तो दूसरी इनिंग्स में मौका नहीं मिलेगा, तो इस इनिंग्स में फील्डिंग साइड चाहेगी कि कम से कम रन पे महदूद करें और फिर उस टारगेट को चेज करने की कोशिश करें जो उनको मिले। ख़राब बॉलिंग, फाइन लेग की जानिब गेंद जा रही है। लॉन्ग लेग से दौड़ी हैं फील्डर, मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाई और गेंद रोल कर गई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। ये 4 रन्स भी हैं और साथ साथ मुझे लगता है कि अंपायर ने इसे नो बॉल भी कॉल किया, या शायद नो बॉल कॉल नहीं किया है। बहुत ही ख़राब बॉल एक दफ़ा फिर। पहले जो बॉल फुल टॉस थी लेग स्टंप पे, उससे भी ज़्यादा ऊंची बॉल, और बैटर ने फिर जो है वो इसको कोशिश की कि इसको फ़ायदा उठाया जाए, 4 रन के लिए खेल दिया। हमारे मियादाद और हदील उबैद दोनों बड़ी एफर्ट्स हैं वुमेन क्रिकेट को आगे प्रमोट करने में, स्पेशली हदील की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं। बोल्ड हो गई, पुल करने गई थी, इस गेंद की लाइन को मिस किया यहाँ पर लाइबा ने, और गेंद उनके स्टंप्स पे लगी। इस तरह अलीशा विकेट लेने में कामयाब। और वो सुपर फ्री हिट नहीं अवार्ड हुई थी, और एज पर रूल फॉर दिस कॉन्टेस्ट उसमें जो अच्छा कमबैक किया। विद इन द स्टंप्स बॉल करनी बड़ी अहम ज़रूरत है, और पुल शॉट के लिए कहीं कोई कनेक्शन नहीं, तो ख़ास पेस नहीं था, लेकिन लाइन बहुत अच्छी थी जिसके नतीजे में कोई रिवॉर्ड मिला। फ्री हिट थी गालिबन। ये वही कन्फ्यूजन है जो हम सोच रहे थे कि अंपायर ने नो बॉल कॉल की कि नहीं की, लेकिन एट दी एंड में समझ सको नो बॉल कॉल की थी, जिसकी वजह से अगली गेंद पे बोल्ड होने की वजह से भी जो है वो महफूज हैं, बावजूद भी उसके। ये लेग बाइक का रन है क्योंकि वो फ्री हिट थी एक्चुअली, लेकिन अंपायर ने कोई ख़ास सिग्नल बस लगता है कहीं हमसे छुपते छुपाते ही दे दिया था। बहरहाल, और बॉलर भी बड़ी खुश थी आउट करने के बाद, उनको भी शायद रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नो बॉल दे चुके हैं। ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, 1 रन। आइए अब नीचे चलते हैं कायनात के पास, देखते हैं कि उनके साथ कौन है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद है एहतशाम बारी, द चीफ मार्केटिंग हेड ऑफ KTPL। सर, टेक अस थ्रू द विजन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट दैट वी हैव राइट नाउ। थैंक यू मच कायनात। बिल्कुल, ये आज का इवेंट एक तरीके से एक लैंडमार्क इवेंट है, और जिसमें हम कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की एक नेक्स्ट जो वर्जन है उसको हम लेके जा रहे हैं, विच इज़ टुवर्ड्स द विमेन टेप बॉल लीग की प्रमोशन। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इवन जो हमारे इस वक्त ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं पाकिस्तान के PSL और दूसरी लीग्स हैं, वो भी इन लाइंस पे इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। ये पहला इवेंट है कि जो अब उसी फॉर्मेट पे जिस तरह से कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग है, इस तरह से हम विमेन टेप बॉल प्रीमियर लीग लॉन्च करने जा रहे हैं। आज इसकी जो है वो एग्जीबिशन मैच है, इनाग्रल मैच है,
और इसका एक रोड मैप यही कि इंशाल्लाह ताला ईयरली हम ये इवेंट करेंगे और इसमें इसी तरीके से पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं वो पूल होंगी, वो पूल उनके यहाँ पे परफॉर्म करेंगी। और जिस तरह से हमारे CEO और चेयरमैन KTPL ज़ोहैर नसीर साहब का विजन है कि इधर यहाँ से हम एक टैलेंट पूल जो है वो डेवलप करें पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए। तो दिस इज़ द रोड मैप बेसिकली। द ग्रेट, आपने मेरे 2-3 सवालों का जवाब एक साथ दे दिया है, बट अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव। यही आप लोगों की एफर्ट है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, एंड यू कैन सी हाउ एक्साइटिंग दिस मैच इज़ गोइंग। आपको क्या लगता है कि हम कितना टैलेंट पाकिस्तान को यहाँ से प्रोड्यूस करके दे सकते हैं? बिल्कुल, आप देख रही हैं कि जिस वक्त भी जितनी लड़कियां खेल रही हैं इनकी परफॉर्मेंस, इनके शॉट्स की टेक्निक्स, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बहुत हाई टेक है। और ये जो ग्राउंड है, ये जो टेप बॉल का ग्राउंड है, ये उनकी एक तरीके से नर्सरी और नर्चरिंग है। प्लस ये कि इसमें जो सीनियर और जो ऑलरेडी पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम में खेल चुकी हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेल चुकी हैं नेशनल लेवल पे, वो तमाम लड़कियां उनकी मेंटोर और उनकी कोच हैं एक तरीके से। तो ये एक मिक्स एंड मैच है जो कि बहुत आगे लेके जाएगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है आज उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो इंटरेस्ट रखती हैं और वो आगे आके खेलना चाहती हैं। दिस इज़ अ डोरवे फॉर देम। थैंक यू सो मच एहतशाम बारी, एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू द कॉम बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया कायनात, और बड़ा अच्छा विजन है एहतशाम साहब का जो उन्होंने बताया कि एक स्टेपिंग स्टोन यहाँ पे रखा है ताकि आगे आने वाले महीनों में, सालों में एक वुमेंस लीग भी कराई जाए और यहाँ से टैलेंट जनरेट किया जाए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत से टैलेंट जो अनसंग टैलेंट है वो भी उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट करवाएं। और टेलीविजन पे मैचेस, सोशल मीडिया मैचेस लाइव जाएंगे तो वहाँ से बहुत से टैलेंट पिक हो सकता है। माहम अपना दूसरा ओवर करेंगी। जवेरिया 43 रन पर नॉट आउट हैं। अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा उनकी जानिब से अब तक। इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुई मिड ऑफ की पोजीशन पर और 1 रन बना इस ओवर की पहली गेंद पर। 100 रन मुकम्मल हो गए KTPL पावर गर्ल्स के। फैमिलीज ऑलरेडी ग्राउंड में मौजूद हैं DHA स्पोर्ट्स क्लब में। बहुत सारी ख़वातीन भी ग्राउंड में मौजूद। न सिर्फ इस मैच का लुत्फानंदोज़ हो रही हैं इस मैच से, बल्कि इंतज़ार भी कर रही हैं कि कब फाइनल मुकाबला शुरू हो द बंग्स वर्सेस पॉपुलर्स KTPL सीज़न 3 का। अच्छा खास ओवर का, दोनों बॉल्स विद इन द स्टंप्स थी और ज़रूरत इस बात की मुझे ऐसा लग रहा है कि फील्डर्स को थोड़ा सा करीब आना चाहिए क्योंकि सिंगल्स की तरफ प्लेयर्स जा रहे हैं और इतने शॉर्ट एलिवेशन नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पर सिंगल्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है। इस गेंद को पुल कर दिया, जोरदार शॉट। लगता है कि फौरन आपकी बात को सुना बैटर ने और रियलाइज किया कि मुझे कोई स्ट्रोक खेलना है। चौका लगाया जवेरिया ने। बहुत ही आला शॉट है, अच्छा मिडिल किया, उसको पीछे गिरा हुआ गेंद फुल ब्लड स्मैश था बाकायदा ये, और वहाँ पे फील्डर मौजूद थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको पहुँचा दिया। अथॉरिटी के साथ इस पुल शॉट को खेला। वेल प्लेड। ये अच्छी बात है कि ये गर्ल्स काफ़ी पावरफुल स्ट्राइकर्स ऑफ द बॉल हैं। इस मरतबा सही तरह टाइम नहीं कर सकी हैं, लेकिन फिर भी 1 रन बनाने में कामयाब होंगी। 49 रन पे पहुंच जाएंगी जवेरिया। एक बड़ी अच्छी बात है कि कोई जो है वो लड़की हाफ सेंचुरी करे, मौका है इनके पास। बहुत ही अच्छा माइलस्टोन होगा ये, और सिर्फ 23 गेंदों का सामना किया, और जैसे आपने बात की कि पावर जनरेट की, जितनी क्रिकेट खेलेंगी लड़की उतनी पावर जनरेट होगी, वो बॉलिंग आर्म हो या वो शॉट सिलेक्शन हो, पुल शॉट हो या स्ट्रेट शॉट हो। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपका बॉलिंग आर्म और आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है। अच्छी गेंद इस मरतबा। रन आउट की कोशिश करनी चाहिए थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विकेट कीपर को, मगर उन्होंने कोशिश की स्ट्राइकिंग एंड पे, और इस दौरान 1 रन बना, लेकिन अंपायर ने जो है वो शायद रेफर भी किया है। आई थिंक जो बैटर थी वो क्रीज के अंदर थी और उन्होंने थ्रो ज़रूर की, एक्साइटमेंट में थ्रो ज़रूर करती विकेट कीपर ने और शबनम हयात, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं, और कोई भी रेफरल हमने नहीं देखा कि वो थर्ड अंपायर की तरफ गया हो। जो मैंने ग्राउंड से नोटिस किया कि ज़रूर उन्होंने पूछा करने के अंदाज में, ये हम देख सकते हैं अब।
यहाँ से तो पाँव बिल्कुल टिका हुआ है ग्राउंड के क्रीज के अंदर। और ये देखें रेफर किया था इन्होंने, लेकिन ये अंपायर रेफर करते हैं बिल्कुल छुप के छुपा के, पता नहीं चलता, क्योंकि इससे पहले एक बोल्ड पे हमने कह दिया बोल्ड हो गई हैं और बॉलर भी सेलिब्रेट करने लगी, किसी को पता नहीं था इन्होंने नो बॉल दी हुई थी और अब इन्होंने जो है वो रेफर किया था। इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, अच्छा शॉट, 50 रन भी पूरे और 50 रन करने का बड़ा अच्छा अंदाज चौके के साथ। वेल प्लेड जवेरिया की शानदार इनिंग्स, 53 पे नॉट आउट हैं। बहुत ही आला इनिंग्स और यहाँ पे अप्लॉज उनके कोहलीज की तरफ से। पीछे के रवा गेंद को बड़े अच्छे अंदाज से पुल किया, पावर का भी हमें इंडिकेशन नजर आई और अच्छे तरीके से मिडिल किया। इस तरह 8 ओवर्स मुकम्मल हो गए और शायद इनिंग्स भी यहाँ पर अख्ताम को पहुंची है। और 111 for 1 ये लास्ट शॉट जिसे 50 मुकम्मल की, बहुत ही उम्दा इनिंग्स, कंट्रोल्ड इनिंग्स और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, कैप ढूंढने में कामयाब। जी हाँ, 8 ओवर्स में अब 112 रन का टारगेट जो है वो KTPL क्वींस को जो है वो मिला है। 111 रन बनाए 8 ओवर्स में पावर गर्ल्स ने और उनकी एक बैटर आउट हुई, लाइबा 9 रन पे नॉट आउट रही और जवेरिया ने 53 रन की खूबसूरत इनिंग्स खेली 24 गेंदों पर और इनिंग्स की आखिरी गेंद पे चौका लगाकर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस और बहुत ही एक्साइटेड है डकआउट पावर गर्ल्स का। और एक ही विकेट गिरी तो डोमिनेंस नजर आई यहाँ पर पावर गर्ल्स की तरफ से और ज़्यादा क्रेडिट दिया गया जवेरिया को, जिस तरह की उन्होंने कंट्रोल इनिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। और अब KTPL क्वींस के ऊपर इंतजार है कि वो टारगेट को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से चेस करते हैं। ये हाईलाइट्स चौके के साथ शुरुआत की जवेरिया ने, इस दफा पहले ऑन साइड फिर ऑफ साइड, फुल टॉस को बचाया ऑन साइड का मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। एक और फुल टॉस, उसको बड़े अच्छे अंदाज से कर्व किया लेकिन कैच ड्रॉप। कैचिंग स्टैंडर्ड को भी काफी ऊपर लेके जाने की जरूरत है। फुल कैच को 4 रन के लिए और फिर खराब बॉल पीछे की तरफ अगेन ऑफ साइड के ऊपर से खेल दिया, बहुत ही आला शॉट, लिफ्ट किया उसको कवर से जाने और एक आउट। आसान कैच, विकेट कीपर शबनम हयात के हाथों में। बहुत ज़्यादा एनिमेटेड रही थ्रू आउट द इनिंग्स, बैकअप करती थी अपनी गर्ल्स को और यहाँ पे 4 रन। मिस फील्डिंग कोशिश अच्छी थी लेकिन क्लीन सेव नहीं, 4 रन मिले। गैप एक दफ़ा फिर और एक हाई फुल टॉस को चौके के लिए खेला, आसान इजी पिकिंग जिस तरह की फॉर्म में थी जवेरिया और क्लीन बोल्ड हुई लेकिन ये एक फ्री हिट थी, स्मैश किया उसको स्क्वायर लेके जाने 4 रन के लिए। अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पावर गर्ल्स की तरफ से। 36 बनाई उसने 17 गेंदों पर, 53 बनाए जवेरिया ने 24 गेंदों पर, बहुत ही आला स्ट्राइक रेट के साथ। और लाइबा 9 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया 13 एक्स्ट्रास के साथ, 111 for 1। बॉलिंग कार्ड, एक विकेट मिली रामीम को, 15 रन दिए। उसके अलावा महाम, तूबा, रूबा, किंजा, ईशा, ये सब ने भी बॉलिंग एक्शन में नजर आई लेकिन कोई विकेट उनको नहीं मिली। पहले विकेट गिरी थी 63 के स्कोर पर। और अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे रन चेस के साथ।
Sitting right to me is Danish Anis. Good evening, Danish. Just a fan of the game, just a humble fan of the game, Falak Sher. Let us remind you that this is just an exhibition match for now, a teaser before what's to come. That is Women's Tape Ball Premier League, brought to you by Badar Expo. And that is going to be a lot of fun. Fun has already started. And the question is, how much power do KTPL Queens have to offer? Aruf Shah will start the proceedings for KTPL Queens. Will face this is a good score. Sundar Siddiqui will be on the non-strikers end. For KTPL Queens to win this one, they'd need 112 runs in the allotted 8 overs. Masuma Jaffrey would be bowling the first over for the Power Girls. It's going to be a very good run chase, I get the feeling. They've got some depth in the batting. Arub Shah, she's an international cricketer. They've been representing Pakistan women cricket team at the international circuit. Has got a job to do with the bat. Here we go. Start of the run chase. Down the leg side, erring in line, tension, nerves. What do you make of it, Danish? They're just new to bowling with a tape ball. That's what I can see. It's a little difficult controlling a lighter ball. They're more used to bowling with a hard ball. That was a long hop, and this will be cut it off in the deep. It was struck nicely, but unfortunately, she chosen the longest part of the boundary. A lot of intensity behind the stumps, bucking up all the fielders to be on their toes. Exactly how this game is supposed to be played. That's Yusra Amer. Down the leg side, did she get a tickle? No, umpire doesn't think so. So we'll have to re-bowl Masuma. Some movement there for Masuma as well. There's a light breeze blowing across the stadium. The Queens in the dugout look pumped up. They look confident. Inside half of the bat. A quick single taken. And that will bring Sundas on strike now. Again, the movement that I was talking about. Aruba swung at it hard. Couldn't get the connection. She goes leg side. It was a full toss, belted hard, but couldn't get to that fielder in the deep. So Sundas gets away with that couple. Yusra Amer is really vocal behind the stumps, making sure not to give away a single run. They will have to fight it out. They have a senior team against them. Had to wait for that. It was slower and picked off nicely. This will be the first boundary by Sundas. A good one to get things going for Queens. Did well to carve that one into the gap. Made sure she played it fine. No chance for the fielder at deep mid-wicket. Picked her spot, picked the gap nicely. $13 for no loss. It's only a start, and it's a good start to the run chase, nevertheless. Off the back foot, that is in the air. This is a chance here for the long on fielder. And she grabs it gleefully. It's a good catch. Finally, Danish, we see a catch being taken. Some good catching technique there. Allowed the ball to come to her, placed herself beautifully under it, and took it perfectly. That was well taken. It's become a rare sight when catches are taken in tape ball cricket, at least from what we've seen throughout the tournament. There you go. Loved it. So did the team. Look at Masuma, she's ecstatic. Sundar Siddiqui gone for 6. It's 13 for 1.
Good thing about that catch was that she got her body right behind the ball and kept her eyes at the last minute on the ball and grabbed it perfectly and in orthodox fashion as well. Apologies for that, Falak. I really wanted to say this. There are so many good things about what the management of KTPL are doing. Hats off to Zuhair Nasir for executing this exhibition match in such fashion. Maham Tariq has come onto the crease. This is not just an opportunity. This is something that will teach them so much about the game. She gets a good one, targeting the legs. Well, there are quite a few things. Words are not enough to describe. And this is that kind of stuff by Zuhair Nasir and company, I would say. After one, it's 13 for 1. Exactly what matters is leaving no stone unturned, doing everything you possibly can, making an anthem, preparing for it, bringing in all the famous celebrities we know to become examples for these girls playing out here, giving them an opportunity to express themselves in whatever fashion they seem fit. Hats off to KTPL management. And he's been trying to change the flavor every time. With the start, you know, the inaugural match, it's Arija Hasib, who is the new bowler. And now, just towards the end, before the final, we have this game, the exhibition match. It's amazing. I'd love to look at the field as well. It's a very orthodox field placement. Oh, thumped hard, and very hard indeed, and nicely fielded it in the deep. So this is what was missing in the first innings. Fielding has been improved by Power Girls. So throughout the men's edition, I was craving for diving efforts, but the girls are showing us how it's done. Here we go. Beautiful technique there. Stayed low, kept her eyes on the ball, grabbed it, and then dived with it. Beautiful stuff. Yeah, got to it with both hands and made sure that she got her body right behind the ball. Very good technique when you're stopping the ball. This was a poor line and dealt with some authority. It's going to be a boundary down to fine leg. She got it very fine. Arup could have had 2 freebies, but she went for 4 instead. Well played. Yes, it was wide. Yes, it was down leg. She still got the connection that she needed. Arup showing some presence of mind there. And there you are. That's the beautiful trophy. Will be handed over. It's after this match. This is for the women. This time she's got hold of it, but all along the carpet for a single. Well, I guess that's the trophy for Women's Table Premier League Season 1. It's absolutely gorgeous. I actually like it more than the men's trophy, if I may say that, or if I may dare to say that. This one's beautiful. Gorgeous. Shorter one, waited for it, couldn't time it still. That one never arrived. She had to wait ages for that. This will change as we see these girls practice more with a softer ball. They will work on their arm speeds, their bat speeds. Shorter one this time, picked away nicely, but there is protection, always protection in the deep. So Arup gets to double figures. And it's going to be a Maham on strike. She is very young at the crease. Thumped hard. We'll give him a single at least. They're looking for 2. We'll have to hurry. And they get it easily in the end. Well, a better throw could have had things entrusted. But it's a couple to end the second over. 2 done. It's 24 for 1.
Loving the energy on the field. Love how these fielders are charging towards the ball, making sure they cover the line of the ball. We haven't seen too many bad efforts in the field apart from dropped catches. Now, that's one more technical aspect of playing with a softer ball, that is a tape ball. Chasing 112 here, KTPL Queens. It's going to be a change in the bowling. Misha Karim is the new coming bowler, right arm medium, and she has a job to do because we have already witnessed 24 in the first couple of overs. Chase is definitely in pursuit. We haven't seen too many wicket keepers step up to the stumps. This is quite friendly pace. You can afford to do that and just create that doubt in the batter's mind that you've got to stay inside your crease. You cannot charge at the bowler. Slapped away through the covers. That beats the fielders in the inner ring. But didn't have enough legs to go to the fence. Caught it off and a couple of runs added to the total. Very good point you made, but predominantly these girls play with the cricket ball, so that's why I get the feeling that maybe they're a little afraid because cricket ball comes with some different pace. That's why they're a little reluctant to come up to the stumps. You need to be a little more free. This time, I don't think she's got hold of it. Or has her. No, she hasn't. It's a catch of the night so far. Well. Who says that they don't know how to catch tape ball? Well, she made her ground beautifully, ran quickly towards the line of the ball, made sure had a body behind it, and caught it beautifully and held on to it. That was the most important part about that. Lost her shape. The ball even swung towards the very end, made sure she kept her eyes on it, and took it safely. It was a very good grab to remove Arub Shah. She made 13. They are 26 for 2. And it's time to go to the sidelines and let's see who is with Hina this time. Thank you so much. Well, on the sidelines right now with me, I have two wonderful women. On my right standing is Miss Adil Ubaid, who is founder of Khelo Cricket. On my left is Miss Alina Sheikh. She is anchor person of Geo News, host a special program which we watch every day. Well, Anila, thank you so much for joining us on the sidelines. How do you feel about this league? Oh my God, I feel absolutely amazing. First of all, I'm not sure how many of you do know that I started off my career as a sports journalist. So this holds a special place. Anything हम देखते हैं men के लिए बहुत opportunities हैं, international forum पर भी, local forums पर भी, गली में बाहर निकल के अपने घर से खेल लेते हैं. बहुत ज़्यादा avenues हैं, बहुत ज़्यादा options हैं, लेकिन ख़वातीन को unfortunately इतना exposure, इतने avenues नहीं मिलते हैं, इतनी safe spaces नहीं मिलती हैं. So to see something like this कि ख़वातीन बाहर आके एक safe space के अंदर match खेल रही हैं, सुकून कर रही हैं, it's not just, you know, sports एक सिर्फ sport नहीं है, it's a way of life. आपको discipline सिखाता है, आपको चीज़ें सिखाता है, we all know that. लेकिन आजकल ये कितना important है, we tend to forget that sometimes because ऑफिस जा रहे होते हैं, घर आ रहे होते हैं, 100 tensions होती हैं, उसके बाद we need this. Khawateen need this, and I'm so glad that the management, the organizers, everyone has realized that it's about time that we give space to women and safe spaces to women to showcase their talent, to just forget about everything else and play their heart out. So I love it. Absolutely. Well, I have. Make it permanent. Exactly. This is exhibition match going on, but they have plans to, initiate proper league for women, Women's Premier League. So we have Adil Ubaid as well. We have seen your work. You are founder of Khelo Cricket. Your purpose, your mission, your goal is exactly the same which is happening here. This is very exciting for me to see. I think the more women that work towards this, I think the more
cricket that happens for women, the more opportunities there are to showcase talent. But besides that, it gives more girls sort of the confidence to come out and play. One of the main reasons why my organization Khelo Cricket started this whole thing was because we felt like not enough girls were confident enough to come out and play. Give them a reason. Start with tape ball. It's the more accessible format. And that's kind of where we started from, and that's kind of why I think things like this are really important, is because now we're watching more people take interest in women's cricket. We're seeing more conversations around women's cricket, more of an acceptance of women's cricket. And I think above all, something like this can manifest itself into a much larger league that may not just be based on Karachi, but you're then giving other girls from other cities the opportunity to sort of come together and be a part of something that could lead to a career in sports. Definitely. Well, Alina, you know, this league is being organized by Badar Expo Solutions. So would you like to, you know, comment about their efforts behind this league? I mean, it's kudos, Badar. And of course, all the organizers who are doing it, like Hadil said, I think it's very, very important. And we were just talking about it on the sidelines. It's not just... And also, let's not forget Geo Super, which is, you know, it is being broadcasted 84 plus channels on 84 plus channels. I think it's very, very important. जैसे मैंने कहा, like Hadil and I were just talking about it, कि what you show really matters. हम देखते हैं हर दूसरे channel के ऊपर it's men's cricket. Even the smallest of matches, domestic cricket, men's cricket होती है. लेकिन ख़वातीन cricket के कितने matches होते हैं जो हम show करते हैं, and the visuals really matter. So just the fact that Geo is showing it, and of course, kudos to all the organizers who are, you know, taking part in it. But everyone who's put in an effort towards it really deserve a kudos and a shout out, because Khawateen cricket हमें देखने को नहीं मिलती. And when we see it, it really shows कि we're putting in an effort towards it. Also, कि हमें देखेंगे तो पता चलेगा ना कि भाई हो क्या रहा है. हम अभी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड में जाके हमारी ख़वातीन ने जीता और मैच जीता, हमें 2 घंटे बाद पता चला और सारे ट्विटर के ऊपर मैसेजेस, but we couldn't access it somewhere, na? So it's really important. Okay, yeah. Alina, thank you so much for wonderful words, and thank you so much to both of you for joining us on the sidelines. Thank you. And now it's time to go back to Combox. Thank you, Hina. As we see that Queens are chasing 112 and they are far behind the target. And to tell you more about it, it's going to be Farooq Riaz and Zishan Khalid. Thank you very much, Falak and Danish. 3 overs have been done and dusted, and they are in a spot of bother. Queens. Just back of length and waited for the ball and then smash it towards long on for 1. So it has been quite a start, but still they are in the game. The target is quite a stiff, and you can see the equation. They need exactly 75 and 29 deliveries. And remember, Power Girls lost only 1 wicket when they batted. Now in the Combox, I've been joined by Zishan Khalid for the first time. Good evening. Good evening, Farooq. Good evening to all our viewers who are watching this exhibition match live on their TV sets on Pakistan's first ever sports channel, Geo Super. Yeah, Power Girls batted really well. I mean, scoring 111, that too in just 8 overs. That was quite an achievement from the batting side, and now they are bowling well as well. It will go down as a wide down the leg side, but if you look at the way they have bowled so far, they have just given away runs at 12 runs and over, and they have picked up 2 wickets as well. Ramim Shamim, who is the captain of KTPL Queens, have done a decent job so far. Up and over. Nice shot, chipped it beautifully. Had she got the distance, oh goodness me, lovely boundary. Beautifully played, well controlled, through extra cover. Yeah, it was well timed, stroke inside out over extra cover, and he caught perfect connection behind that as well. Now, we might not see that much power hitting from these women cricketers, but the way they have been timing the ball well, and the fact that she was standing ahead of the crease and took it on the full. I mean, that ball traveled towards the longest side of the ground, otherwise a little finer or squarer might have carried all the way for 6 as well. Just a little bit extra flight, tapped it. Will they come back for 2? Could be 2 here. The 3 fielders were converging and no real communication, and easily they completed 2 runs. Now it's time to go downstairs to Hina once again.
Thank you so much. Thank you so much, Farooq. With me on the sidelines is His Excellency Dr. Bakheet Atiq Al Rumaiti, Consul General UAE. Thank you so much, sir, for joining us. Well, interesting thing is that sir can speak in Urdu. I was about to say Kaifa haluka, but it's up to you, sir. It would be special अगर आप हमसे उर्दू में बात करें KTPL के हवाले से. बिल्कुल उर्दू में बात कर लेंगे. क्या कहेंगे, किस तरह यहाँ माहौल लग रहा है KTPL ये लीग, टेप बॉल क्रिकेट लीग के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं KTPL का जो इनकी आज माशाल्लाह. अच्छा सर माइक ऊपर करें ताकि व्यूअर्स अच्छे से सुनें. जी जो KTPL का जो आज माशाल्लाह टूर्नामेंट है और ख़ास तौर पे मैं जो देख रहा था यंग जनरेशन काफ़ी शामिल करने और माशाल्लाह जो बच्चे भी साथ कर रहे इसमें बड़ा खुशी और फ़ख्र नज़र आ रहा. पाकिस्तान को इसी तरह हमेशा इस तरह को नया जनरेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए और माशाल्लाह सब आए हुए सब खुश नज़र आ रहे. और मैं इनकी जो सेकंड टूर्नामेंट था जो पहले स्टार्ट हुआ था मैं भी आ गया था देख के लेकिन अभी भी और पहले में बहुत फ़र्क है माशाल्लाह. और ये जो टेप बॉल है यूएई में भी काफ़ी लोग इनको अभी इंटरेस्टिंग भी ज़ाहिर कर रहे हैं. काफ़ी नया जनरेशन भी उधर यूएई में पाकिस्तानी या अदर जो नेशनलिटी भी कर रहे हैं और उम्मीद है अल्लाह के ऊपर इंशाल्लाह इसी तरह टूर्नामेंट भी यूएई में शामिल. This is the women exhibition match going on here. They have decided to initiate Women Premier League and you know ख़वातीन को क्रिकेट खेलना उनको एम्पावर करना. अब नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर लीग देखेंगे ख़वातीन के KTPL की एफर्ट से क्या कहेंगे? बिल्कुल KTPL माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहा है. ख़वातीन को इस तरह इन्वॉल्व करना है और इनकी जो फंक्शन जो हुआ था एक माह पहले वो भी शामिल किया था मतलब वुमेन को भी शामिल करने थे और आज जो नज़र आ रहा इनको बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए उनको सपोर्ट भी करना. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आला सतह जो भी है गवर्नमेंट के लेवल है आपकी इस्लामाबाद के लेवल या लोकल गवर्नमेंट या बिज़नेस कम्युनिटी इसी तरह टूर्नामेंट ज़रूर सपोर्ट करना है अपना नया जनरेशन के लिए. नया जनरेशन यही पाकिस्तान का फ्यूचर है यही पाकिस्तान को आगे जो लेके जाना है और उम्मीद है अल्लाह का इस तरह टूर्नामेंट होने चाहिए और बहुत मज़ा आ रहा. आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा इसी तरह प्रोग्राम में भी शामिल होंगे इंशाल्लाह. Thank you so much for your kind words, sir, and thank you so much for joining us on the sidelines. So His Excellency Dr. Bakheet was with us. Now it's time to go back to Combox. Thank you very much, Hina. Dr. Bakheet was down there with Hina Didar and he also showed a lot of interest to promote not only the men cricket but also the women cricket, not only in Pakistan but also in UAE. So tape ball cricket is already getting plenty of fame. At the moment 50 comes up for Queens, 50 for 2 after 4. Yeah, the fact that cricket is now being played in association nations so much that more and more people have now showed interest towards the game. Mehak Amin meanwhile is a new bowler for the Power Girls. She's going to be bowling her first over. We recently saw UAE under-19 team beating Pakistan in under-19 Asia Cup that is being played in Dubai. That's why you see more and more interest being developed in associate nations, and it's important to promote the game of cricket amongst women as well. And I think it has been a very good initiative taken by KTPL Management Committee to organize this women's exhibition game just before the final. But right now, it's a difficult situation for the Queens because they still need 62 more runs to win with just 4 overs remaining, Farooq. Up and over, clear the ring, and that should be a boundary. Chase is on, ball wins the race, beautifully played. Boundary to begin the over. Yeah, once again, beautifully timed, as we should say about that stroke. It was a half tracker and it was slower in pace. She just waited for the ball to come closer, and she spotted that as well. The fielder, there were no fielder position there over extra cover. It was a vacant position, and she timed it well enough as well. She got a great match awareness. Didn't try to heave it, just try to chip it. She knew there was nobody out there and just cleared the on-field. The outfield did the rest. And despite a couple of fielders were after the ball went over the boundary. Goes onside, swept away. Throw is a protection. She wants 2, but throw is good enough. Yeah, nicely played once again, hitting it on the leg side on the merit of the ball. It was pitched on the leg stump, and she swept that. Unfortunately, there was a fielder positioned perfectly at square leg. Couldn't get a boundary, but a single is as good as a boundary because
Now Maham is on strike, and they need to retreat the strike as well because we might see more and more misfields. Since it's a left and right hand combination out there for Queens, it's going to be a change in the fielding positions. Now 4 fielders are standing inside the inner ring on the offside for the right-hander. They've got a fielder at long on and long off. The leg side region is pretty vacant, just 1 fielder at fine leg. Some changes in the field here because there is a right and left hand combination. The Mehak, the slow left arm operating from the far end. Maham 4 of 4. She really needs to step up for her side. Big full toss. Plays straight. Could be 2 here. Could be 2. And set back by Maham. Good anticipation there from the fielder at long on. As soon as she saw the ball is coming towards her region, she straight away charged towards the ball. And time for us to charge towards Hina Didar out there on the sidelines once again. Thank you so much, Zishan. So, women exhibition match is being played between Girl Power versus Queens. But in the meantime, I have been joined by Mr. Arman Amir Arabi, who is CEO Boost Lifestyle. So, Mr. Young CEO is with me. So, thank you so much for joining us once again. Assalamu alaikum. Thank you for having me over. Wa alaikum assalam. So, what would you like to say about the women match being played? I think it's really exciting and entertaining match और KTPL का बहुत ही अच्छा initiative है to develop women in sports and I think अगली बार पूरा tournament organize कराएंगे, right? So it's a really great opportunity for women and that's why at Boost we are promoting this as well because we believe in this. I think that women's sports should be promoted more often. Also, would you like to tell us about the Boost, their vision and how does it relate it to the cricket? Sure, Boost is basically a tech and lifestyle brand. Boost is a brand for Pakistanis by Pakistanis. It's not my brand, it's Pakistan's brand. So our products involve smartwatches, earbuds, headsets and such products, like this. कि sports से भी उनका link है, it's, पूरा lifestyle से linked है products. Okay, wonderful. So I hope you enjoy the final match of the men's team as well. Yes, definitely. I'll catch that live and overall tournament, काफी entertaining रहा है and I'm really excited for the final. I caught the semi-finals. उससे पहले matches हुए थे, so I'm really excited for the final. Okay, Arman, thank you so much for joining us on the Thank you. sidelines. And now let's go back to Combox. Thank you so much, Hina. Meanwhile, another wicket went down for Queens. A very well catch taken behind the stumps by the wicket-keeper. Now, it's not that easy whenever the batter is sweeping the ball. Meanwhile, the new batter is Yusra Ehtisham. She's an all-rounder. And she needs to deliver because the required run rate is now creeping up for Queens. And they have just lost another wicket. Ramim, she was batting really well. She was timing the ball well enough. She was getting boundaries. She was hitting the balls into the gap. And now she has been dismissed. It's not going to be easy for the Queens from here on. It was a big wicket. She was looking dangerous. And she was playing her strokes with real authority. Try to sweep it and off the edge. And finally, good smart take picked up by the keeper behind the stumps. It's Yusra Amir. Very good anticipation from her and it was a key wicket indeed. She went for the big shot, clear the infield towards cow corner. Diving effort, good work. Great commitment from the girls. Could be run out through, it's not good enough. Should be gone, easy run out here at the bowler's end. Wicket number 4 down of Queens here in Moin Khan Academy. Yeah, comedy of errors between the two batters, and I would like to give the credit to the wicket keeper because whenever the batter plays the shot in the field, she straight away announces there's a call for 2 so that the fielders get charged up. And even they completed those 2 runs, they wanted to come back for the third, and both the batters were stranded at one end. So back-to-back wickets have gone down for Queens. Maham Tariq walking back after scoring 5. Now they have lost their 4th wicket for 58 on the board. So 58 for 4 at the moment. They are in trouble, Queens. And now it's time to go downstairs to Hina once again.
next, who is Miss Kainat Munir. She is owner of Peng Salon, Bukhari. Well, thank you so much, Kainat. आपने हमें join किया. So you are supporting women cricket. Your presence shows this. Assalamu alaikum. Of course, honestly speaking, I'm watching and I would love कि मैं ये सोच रही थी मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर. Seriously, मुझे अपना time याद आ गया and it's very positive. You used to play decision. cricket? Not exactly, but when I was student, so I would love to play cricket and I participated some matches, but not like this because at that time Pakistan doesn't have this kind of atmosphere. Yes. But right now I just loved it. और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ इन सारी लड़कियों को देखकर कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. सो इट्स गुड डिसीजन एंड आई वुड से कि इट्स माइंड ब्लोइंग लाइक राइट नाउ. मुझे इतना अच्छा लग रहा है एज अ बिजनेस लेडी. मैं ये देख पा रही हूँ कि अब हम कितना आगे जा रहे हैं, कितना अच्छा प्रमोशन हो रहा है और हर किसी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो Definitely. But are you following KTPL? Or of course, finalist team, which one you are supporting? DHA Dabangs versus Clifton Popular. DHA Dabang. Okay, DHA Dabangs को आप support कर रही हैं. ठीक है जी. क्योंकि DHA Dabang जिनके पास है दानिश, वो भी मेरे भाई हैं. So okay, I have to be. So that means you are staying here and will witness the final match as well. Yeah, definitely. Okay, Kainat, I would be here. Thank you so much for joining us and enjoy the match. And now let's go back to Combox. Thank you so much. Thank you very much, Hina Didar. That's the equation, 54 of 18. Plenty of boundaries are required, and you can see the captain of KTPL Power Girls, Javeria, is very animated. She batted really well and now is leading from the front, marching her troops. So Arija is into his second over and bowling around the wicket to new batter Kinza. Way outside the off stump, it was too far to make any sort of contact. Yeah, coming around the wicket, trying to create a difficult angle by bowling across the right-hander away from the off stump, but this time it went a little too wide. I would like to give credit to the way Power Girls have operated. Now the equations is much more difficult for Queens, but still they are making time. They are making sure that the field placement is spot on. They won't give away easy runs. This time they are looking to come back for a second. Oh, a direct hit would have made things a little interesting down there at the bowling end. Well, they had to go for every kind of run there. Throw was almost perfect. Diving effort from the batter, and she wasn't in the frame, but she tried her best and relied everything on her luck. So she survived. Off the mark with couple. Short and wide. Couldn't find the gap, and all three fielders are exactly at the edge of the 30-yard circle. So it's quite difficult to find the gap through that region. Now this is really sensible bowling this from Arija. She has taken 3 fielders inside the inner ring on the offside. In fact 4. That fielder at cover and extra cover are pretty close to each other, and now she's deliberately keeping the ball outside the off stump. Just like that. Could have easily hit that on the offside, but instead tried to hit that on the leg side and completely missed the line of the ball. So they are just being given a chance of playing one exhibition game, but the skills and the sense that they have shown, they do deserve to get a league on their own, women's cricket. It's a fine shot. Low full toss. Good work. She could not find the gap once again. Nice anticipation and good commitment. So a couple of runs are taken again. Tell you what, in the last 2 or 3 overs, the ground fielding has been excellent. I mean, we haven't seen that sort of a ground fielding from the men's side because we don't see that much boundaries. They only rely on maximums, but the ground fielding, the diving and stopping the ball and throwing the ball back has been exceptional from these ladies so far. Good strike. Up and over. Is it long? But this should be cut off. Coming back for 2 once again. Yes, quite right. The commitment level has been really good. Some very impressive fielding performances at the ground fielding level, and obviously they're playing with real passion and flair. And you're quite right. They deserve a proper league for women. That will really help them to improve further, because they have really shown a lot of sense and a lot of guts. Outside the off stump, tap the ball away. Yusra and single to end the over. She will keep the strike. 6 gone, 4 for 68. And once again, it's time to go to Hina downstairs.
Thank you so much. So with me, I have been joined by two wonderful ladies. On my left is Miss Salima Imtiaz, and she is first international female cricket umpire. And on my right is Miss Mehreen Masood. She is educationalist. Well, let's start from the umpire. Madam, thank you so much for joining us. Well, आप खुद being umpire इसकी importance समझती हैं कि इस तरह के platform ख़वातीन लड़कियों को, young लड़कियों को provide करना so that they can showcase their talent. डेफिनेटली इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बच्चियों को ज़रूर मिलने चाहिए और हमारे यहाँ चूँकि गर्ल्स के लिए जो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं और अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की जब मिलेंगी तो बच्चे और खुल कर आएंगे। अभी ये जब लाइव टेलीकास्ट भी जा रहा है, जब पेरेंट्स देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह के इनिशिएटिव स्टेप्स उठाए जाएंगे तो पेरेंट्स को बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों को क्रिकेट की फील्ड में आने के लिए रोकते नहीं हैं। और इस वक्त हमारे पास बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो आई होप कि ये जो इनिशिएटिव स्टेप आप लोगों ने उठाया है या जो KTPL की टीम ने उठाया है ये कैरी फॉरवर्ड हो और बच्चियों को जो है वो मौका मिले यहाँ पर आने के लिए। एंड ऑल्सो आप भी क्रिकेट खेल चुकी हैं, तो आप अपने टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करें तो आपके लिए तो ये बहुत खुशी का मौका है कि इस तरह लड़कियों को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे टाइम पे तो क्रिकेट होती ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल बहुत कम होती थी। हम लड़कों के साथ खेल खेल कर जो है वो आगे आए हैं। लेकिन ये कि मैंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, मगर जब बच्चियों को देखती हूँ खेलते हुए तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होती है, एक खुशी होती है कि बच्चों को मौके मिल रहे हैं, इस तरह के मौके मिल रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि और भी लोगों को इस तरह से आगे आके और उनको मौके देने चाहिए। वेल मिस मेहरीन, आप इस वुमेन एग्जीबिशन मैच को किस तरह देख रही हैं और टैलेंटेड लड़कियां छक्के चौके मार रही हैं वैसे? ज़बरदस्त हो रहा है। मैं सलीमा की बात को सेकंड करूंगी कि आजकल के दौर में और शायद पहले वाले दौर में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। बट आई एम ग्लैड दैट नाउ पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड दे आर हेल्पिंग देम टू शोकेस देयर टैलेंट। एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, नो डाउट अबाउट इट कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है। पूरा दिन लगाना पड़ता है आपको, बहुत एफर्ट लगता है इसके ऊपर। कोई भी काम खैर बग़ैर एफर्ट के नहीं होता, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है। फिर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं अपने बच्चों को जैसे स्कूल में देखती हूँ, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। आजकल हमारे यहाँ लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उनका कॉम्प्लेक्शन, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और वो ख़राब होता है तो फिर घर वालों की तरफ से, फैमिली वालों की तरफ से कि ये क्या कर दिया बच्ची के साथ, अब इसके कलर का कॉम्प्लेक्शन का क्या होगा और क्या होगा इतने। लेकिन इस वक्त पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है और ज़रूरी है कि स्कूल की तरफ से भी वैसी ही सपोर्ट मिले ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें, क्योंकि अगर वहाँ से ये सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आज ये मैदान इस तरह से भरे हुए नहीं नज़र आएंगे। Well, thank you so much both of you for joining us on the sidelines, and now it's time to go back to Combox. Thank you very much, Kainat, once again. Hina, take your pardon. The 7th over is in the process at the moment, and they are in trouble because asking rate is creeping up, and chances are getting slim to win this contest. And that's a trophy for Women Table League, and Queens are looking really good to pick it up. In fact, Power Girls, and look at that, the difference is overall quite huge. Once again trying to sweep that, but just getting the inside edge and the ball going nowhere whatsoever. Good spell this has been so far from Mehek. I think she was the one who picked up that big wicket of the left-hander. Was playing so well, Ramim, the captain as well of Queens. It's now getting more and more difficult for the batting side to get near to the total. Down the wicket she comes and just getting an inside edge. The wicket-keeper will be running after the ball since there was no fielder at fine leg. Meanwhile, they're going to come back for a couple. A good over comes to an end from Mehek. 7 done. Queens are now at 76 for 4. And once again, it's time to go to Hina. Thank you so much. So this time I have been joined by Miss Hina Velji, who is principal of Aga Khan Higher Secondary School. Thank you so much, madam. आपने हमें sidelines पर join किया. What are your thoughts about this KTPL? Thank you so much, Hina. I would like to first of all congratulate KTPL for providing young girls an opportunity. It's an opportunity whereby the girls are being empowered in the form of sports.
So I want to congratulate the entire team. We really enjoyed this event. Not only that, I'm here to support one of my alumni, Kainat Imtiaz, who actually played from our school and now representing Pakistan at an international level. Not only that, we have a lot of our girls participating and playing in under 19 or Pakistani cricket team. This kind of initiative I think will help the girls because बच्चियाँ जो है ऐसे avenues तलाश करती हैं but उनको मौका नहीं मिलता कि वो जाएं और कहाँ पे अपने talent को दिखाएं. So I'm sure this avenue will help the girls to groom, to empower them. So really congratulate to you all. All right, thank you so much, ma'am, for Thank you joining so us on the sidelines. Thank And now it's time to go back to Combox. Thank you, Hina, once again. His last over is about to commence. It's Masuma into his second over. 1 for 13 in her first over. Quite impressive. Got him. Hit the timber. Within the stumps, and she made a mistake here. Missed the line, and wicket for Masuma here. Yeah, they didn't have any other option either. Coming down the track, trying to hit that big, but almost yorked herself there. And another wicket goes down, this time for Queens. So Power Girls are so far all over the Queens right now. Kinza Wahab making her way back after scoring 8. It's 76 for 5. $76 for 5 on the board, and there's just 5 balls left to conclude this match. The women exhibition match just before the grand finale that will commence very soon today. Ikra Gulzar, the new batter in for Queens. She has tried to hit that straight. She hasn't timed it well enough. I don't think it's going to carry to any of those two fielders straight down the ground. They're going to come back for a couple. Well, obviously, it seems like Power Girls are going to be ending up victorious in this women's exhibition game. But I think overall, women cricket has won tonight. Now, the amount of excellence that we have seen in the field by both the sides, I think they will definitely be much more happier to play a full league from next year onwards. And not only it's going to help them to get involved in a healthy activity, but it's also going to help Pakistan cricket to find out cricketers so that they can represent Pakistan women's team. Yes, indeed. And quite a few platforms are already available, but the management of KTPL, they are trying hard to provide a much better, much bigger platform at table level, and also from this table level, they can certainly, some of them can go higher in the ranks. Nick dropped straight in and straight out, and almost wicket number 3 for Masuma in this match. Yeah, it was pitched up outside the off stump. She got an edge, and the wicketkeeper had an opportunity to take it in the second attempt as well. But the ball just landing in front of her. Once again, a decent delivery. Will just get a single. They won't be, in fact, they shouldn't be worried about the singles being taken at this stage, because just 1 ball is now remaining in their innings. And overall, it has been a brilliant effort by Power Girls. Runs with the bat in the first innings and made it almost impossible for Queens to chase it down. It's a powerful show from Power Girls. It's turning out to be an absolute comprehensive victory for them. The last ball of the match. Goes to offside, finds the gap. And they will come back for 2. And that's it. So victory goes to Power Girls. It's a comprehensive victory. And they have won it by 28 runs. It's a very good win. They are still running. I don't know if it will be count or not. So, nevertheless, they are happy now. The happy bunch of Power Girls. They have beaten KTPL Queens quite comprehensively. And overall, they just lost 1 wicket when they batted. Javeri was a star performer. And now they really struggle, Queens. In the end, they got just 84 for the loss of 5 wickets exactly in 8 overs. Yeah, brilliant effort this from Power Girls. They scored a mammoth total on the board, 111 in just 8 overs. It's always going to be a big ask for Queens batting second. And not only they batted well, but they also bowled well, and they also fielded well. The ground fielding has been really excellent from the girls in blue. And they
held on to their catches, although we saw a few catches being put down as well, but because of the runs they had already gotten in the first innings, it became almost difficult for the girls in red. But they will take it. It's a victory for women's cricket tonight here at DHS Sports Club Moin Khan Academy, and a lot of credit should go to KTPL management to have an all-important women's game just before the final. Most of the girls have got real exposure of playing cricket here in the DHA, and this match is telecast live on Newspaper and also on different platforms. So it's a great experience for these young girls, and certainly that will encourage them to play more and more cricket and find more ways to express themselves at different level. So a lot of schools and colleges are also making their effort. But at the moment, it's the first one from KTPL, and it's a kind of a stepping stone. Very soon we will see a proper league, and so many other girls, other stars, rising stars, they will be in action soon. And that's a celebration from the Power Girls. Wonderful show. They've won it quite comprehensively. And Queens really struggled to get going, no real partnership. And that's the start. The highlights. Some high shots, some good effort we saw in the field. The ground fielding was good and the catch was taken. Nice and clean. Nicely put away. That was the opportunity. Cleared the infield. It was a smash to the onside. It wasn't long enough. A fine catch. Really, it's a good one. And chance of a run out. And Rami was playing really well, Zishan. Yes, when she was out there, there might have been few chances of Queens making a comeback in the game, and she was timing the ball well enough as well. She was very good on the offside. She was waiting for the ball to come closer to the bat and then time the ball, but that's how she got dismissed. A very good catch taken by the wicket keeper, and after that they just couldn't really recover. We saw not that many boundaries, but excellent fielding effort from the boundary rows by the fielders. We saw a few run-outs towards the end of the innings as well. That's when they were looking to get that third run and ended up losing a wicket. Tried their level best to play a few big shots as well. That was a drop catch by the wicketkeeper towards the end of the innings, but by that time it was a little too late for Queens to get near to the total. So good job done by Power Girls. They win this exhibition match, women's exhibition match against Queens, and they will be having a night to celebrate later on. That's the batting card. Arup scoring 13. Sundus and Maham couldn't really get on with a big score. Rami being the top scorer with 22. Yusra scoring 13. Kinza scoring 8. And Ikra staying unbeaten on 5 till the end of the innings. Just 12 extra runs were given by Power Girls during their bowling lineup. Many bowlers were used, 5 to be precise. Masuma picking up 2 wickets and a wicket apiece to Nisha and Mehak. Power Girls winning this game comfortably by 27 runs in the end, and they're going to be lifting that beautiful Tape Ball Women's League trophy after a short while. That's the match summary. KTPL Power Girls batted first, scored 111. Javeria being the top scorer, 53 of just 24 deliveries, and Yusra also supported her very well, scoring 36. In reply, KTPL Queens just managing to score 84 for the loss of 5 wickets. Rami being the leading scorer with 22. Masuma bowling really well, picking up 2 wickets for just 21 runs. And in the end, Power Girls managing to win it comprehensively by 27 runs. We'll take a short commercial break, and after that, it's going to be the presentation ceremony of this women's exhibition game.
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ अब वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग का भी आगाज हो गया। आज यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में एक ऐसे सफ़र का आगाज़ हुआ है कि जिसकी ज़रूरत दिखाई देती थी। पाकिस्तान की वुमेन्स ने क्रिकेट में बहुत ही नाम कमाया है, लेकिन एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि जहाँ पर आप हमारी बच्चियों के चेहरों पे खुशियाँ भी देख सकते हैं। और इस ऑल इम्पॉर्टेंट लॉन्चिंग मैच, एग्जीबिशन मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और उसके साथ साथ उन 84 ममालिक के जहां हमारी ट्रांसमिशन जा रही है और जितने लोग भी यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में खासकर जितनी खवातीन मौजूद हैं, आप सबको ज़बरदस्त किस्म का खुशामदीद। आज जो एग्जीबिशन मैच खेला गया वो हार जीत से हटकर था। आज एक पैगाम गया हमारी बच्चियों को जो घरों में हैं, खेलना चाहती हैं, एनवायरनमेंट की वजह से परेशान है या मौके इतने नहीं है, तो फिर अब कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, अब वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सब तैयारी कर लें। पूरा मौका होगा आपको एक सेफ बेहतरीन एनवायरनमेंट में खेलने का। आज जो मैच खेला गया उसमें कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग क्वींस और उनके साथ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग पावर गर्ल्स मद्दे मुकाबिल थी, जिस मैच में आज पावर चल गया। पावर गर्ल्स ने 27 रन से फतह हासिल की। वेरी वेल प्लेड पावर गर्ल्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सीनियर सियासतदान, फॉर्मर मिनिस्टर सिंध मिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मिस्टर बखीत अतीक अल रहमती, कौंसल जनरल यूएई, जो हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच बखीत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप उनके साथ जो साथ साथ हमारे खड़े रहे सीईओ एएसएफ ब्रिगेडियर अरफान अख्तर साहब। थैंक यू वेरी मच अरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे बेवरेज पार्टनर भी हैं और इनकी टीम अब से थोड़ी देर के बाद जो फाइनल खेला जाएगा, पॉपुलर ग्रुप की टीम क्लिफ्ट एंड पॉपुलर, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शहबाज अली मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कोई और नहीं, ये जो सारा मेला सजाया है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मैनेजिंग डायरेक्टर बदर एक्सपो सोल्यूशन एंड चेयरमैन यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर ज़ुहैर नसीर। बहुत सारी तालियां ज़ुहैर भाई के लिए। और जो मैं नाम ले रहा हूं, द वन एंड ओनली प्रेसिडेंट KTPL जावेद मियादाद साहब, ये बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और यहाँ मिस्टर तौसीफ अहमद साहब भी नेशनल सिलेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो स्टार्ट में KTPL के लिए बहुत काम कर चुके हैं। तौसीफ भाई थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मिस्टर अरमान सीईओ बूस्ट और उनकी वालदा खास तौर पे आज इस विमेंस इवेंट में तशरीफ लाई, मिसेस उज़मा अरबी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि ओसाका लाइट्स और ये क्रिको टेप आपने देखा शमीम अहमद भाई, जबरदस्त शमीम भाई, थैंक यू। जबकि जो खवातीन खास तौर पे आज तशरीफ लाई हैं, आप लोगों का तो खास तौर पे बहुत शुक्रिया। आज अपने कीमती वक्त में से आई, जिनमें हमारी ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ आगा खान कॉलेज मैडम हिना वीर जी साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट फीमेल अंपायर ऑफ पाकिस्तान, एट द सेम टाइम निक्सर कॉलेज के लिए इस वक्त ये स्पोर्ट्स को हेड कर रही हैं सलीमा इम्तियाज साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि खेलो पाकिस्तान की हमारी बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं जो आज यहाँ तशरीफ़ लाई, हदील उबैद साहिबा, थैंक यू वेरी मच हदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिसेस शाह के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मिसेस अस्मा शाह हर जगह हर लम्हा खड़ी हुई दिखाई दी, हमारी वेमेंस विंग के साथ भी यहाँ खड़ी हुई हैं। जबकि हमारी जियो न्यूज़ की बहुत ही सीनियर और ज़बरदस्त एंकर अलीना यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, थैंक यू वेरी मच अलीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैरीन मसूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ मेंबर एलुमनाई पियन, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द वन एंड ओनली मिसेस जैन, थैंक यू वेरी मच मिसेस जैन। एंड पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम ज़ैबा शहनाज साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी विमेंस के लिए आज बहुत सारी तालियां,
जो आज आपके मेंस फाइनल को और रौनक बख्शने के लिए यहाँ जमा हुई हैं। अब कुछ इनामात का सिलसिला शुरू करती और कई सारे इनामात हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ इनामात ऐसे भी हैं कि जो इंडिविजुअल आज हमारी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे सब लोग यहाँ जमा हुए और वो देने के लिए पहुँचे। आज के अगर मैं इस मैच की बात कर लेता हूँ तो कई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई दी। युसरा आमिर 36 ऑन 17 बॉल विद 4 एंड 1 6, बहुत तालियां। मासूमा जाफरी 21 फॉर 2, लेकिन आज की मैन ऑफ द मैच 53 जबरदस्त रन्स, 24 बॉल 7 4 एंड 1 6। ऐसा लगा मेंस KTPL में खेल रही हैं जवीरिया रऊफा। जवीरिया तशरीफ लाएं। जवीरिया, इतने तो हमारे मेंस भी नहीं मारते, आज इतनी बॉल पे आपने रन्स कर दिए, वेरी वेल प्लेड। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा हमारा ये मेला UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग अब पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग की तरफ सफ़र कर रहे हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विमेंस के लिए और मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर आकर। जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था यहाँ पर, एक बहुत अच्छा मैच हुआ और मज़ा आया खेल के। मासूमा कितना एंजॉय कर रही हैं? वैसे ये सेफ एनवायरनमेंट देखने के बाद क्या पैगाम आप देंगी अपनी बच्चियों को जो आना तो चाहती हैं, कभी हार्ड बॉल से डर जाती हैं, अब टेप से कम प्रैक्टिस तो करेंगी ना अच्छी? टेप बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है कि लड़कियों को बहुत आना चाहिए और खेलना भी चाहिए कि इंजॉय करने को मिलता है क्रिकेट खेलने को, सीखने को और आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर आएँ, खेलें, बिल्कुल इंजॉय करें। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। जवीरिया रऊफ आप आइएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सर आप आगे आएंगे और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी पेश करेंगे। आप अभी रुके, अभी अभी आपके लिए। और बखीत भाई आप भी आगे आए ना जरा। विनिंग प्राइज बखीत मिस्टर बखीत अतीक अल रहमती कौंसिल जनरल UAE पेश करेंगे। रुकिएगा, आपके लिए बूस्ट का भी अवार्ड है और इस बार मैं अरमान से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा बल्कि मिसेस उज़मा अरबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आएंगी और आज आपकी बर्थडे भी है, इनका हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त किस्म की आपकी परफॉर्मेंस रही और हमारे ओसाका क्रिको टेप जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ओसाका लाइट्स जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। बेस्ट कैच के लिए शमीम भाई आप भी आगे आइएगा साथ साथ और ये अवार्ड दीजिएगा और ये अवार्ड जाएगा अरीजा हसीब। अरीजा बेस्ट कैच। अब कुछ इनामात हैं जिनके लिए मैं मैडम आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आगे आएंगी। ज़ुहैर नसीर साहब, जावेद मियादाद साहब, अरफान भाई आप आगे आइएगा, शहबाज भाई आप आगे आइएगा। मिसेस शाह प्लीज आए जल्दी प्लीज। मैं असल में इतने सारे लोगों कंफ्यूज हो जाता हूँ। सबसे पहले कुछ मैनेजमेंट के लिए अवार्ड्स हैं। मैनेजर मोइन खान एकेडमी, जबरदस्त काम किया गजमफर ने। गजमफर आइएगा, ये शोर सुने आप। जावेद मियादाद साहब गजमफर के लिए आपके हाथ से जो मोइन खान एकेडमी में काम कर रहे हैं। सईद भाई हमारे नेट साइड के तशरीफ लाइएगा। ज़ुहैर नसीर साहब आप आगे आएंगे और सईद भाई हमारी जबरदस्त किस्म की प्रोडक्शन। आए सब आज हम देंगे। ये आज हमारी सेलिब्रेशन ही मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह हमारी विमेंस क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। जो कोशिशें जावेद मियादाद जैसे दिमाग जब कर रहे होंगे, तौसीफ भाई जैसे, तो बहुत ही आगे जानी है इंशाल्लाह। इनके साथ
स्पॉन्सर्स में अगर मैं बात कर लेता हूं, या मार्केटिंग हेड हैं रिपब्लिका के, जरा तशरीफ लाइएगा। फहद, मार्केटिंग हेड, मिस्टर फहद आइएगा सर, आप अपना अवार्ड रिसीव कीजिए। मैं बखीत भाई जरा आगे आएंगे, आप ये अवार्ड देंगे। ये कैलिफोर्ड के नुमाइंदे हैं हमारे, जो ज़बरदस्त हमारे साथ जुड़े रहे। और इसके साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्विज एंड नसीम मसाला गफ्फार, हेड ऑफ इवेंट, प्लीज गफ्फार साहब तशरीफ लाइएगा। चले जाओ। आइए नासिर शाह साहब, आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ये अवार्ड देंगे। अभी बहुत सारे अवार्ड सब लोगों ने मिलके देने। अब मैं जरा चाहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब और शहबाज भाई, आप जरा दोनों साथ ही आ जाइएगा, क्योंकि कुछ अवार्ड्स हैं जो आपके साथ साथ बच्चियों को आती जाएंगी और आप देती जाएंगे। चेक्स के साथ जो पॉपुलर का गिफ्ट है वो चेक के साथ आएगा, वो दोनों पेश करेंगे। पॉपुलर का गिफ्ट एंड चेक। सबसे पहले आज की लूजिंग टीम के प्लेयर्स को मैं यहाँ मदऊ करूंगा, जिनके लिए कैश प्राइज भी है और पॉपुलर की जानिब से जबरदस्त इनाम शहबाज भाई आपके लिए यहाँ लेकर आए। सबसे पहले टीम कैप्टन रमीम शमीम, नासिर भाई आप भी रहेंगे, बखीत भाई आप भी आगे रहेंगे। आइए जनाब आगे जाएं सर। ये सारे अवार्ड पॉपुलर ग्रुप का अवार्ड भी और चेक भी देंगे। ये सारी बच्चियों के सूट साथ में आएंगे। उनके बाद महम तारिक, कम ऑन महम, चेक एंड पॉपुलर का गिफ्ट। इन सारी बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। जुहैर भाई आगे आए आप, प्लीज आए ना, साथ खड़े हो। जावेद भाई आगे आए, बखीत भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारी जूरी है, तौसीफ भाई। और उनके बाद युसरा एहतिशाम, ऑलराउंडर है। देन सुंदर सिद्दीकी, जल्दी जल्दी आना है। उसके बाद अरूप शाह, तैयारी रखें। हाँ, अरूप शाह के बाद जल्दी जल्दी आना है। अरूप शाह, तूबा खान, अरूप शाह, उसके बाद तूबा खान, जल्दी आ जाइएगा आप भी। शहबाज भाई की जानिब से ये हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पॉपुलर। आप सारी बच्चियों के लिए सूट लेकर आए। तूबा खान कम ऑन, अरूप शाह आप आ जाएं। इकरा गुलजार, राइट हैंड बैटर, इकरा गुलजार कम ऑन। किंजा वहाब, उर्वा सैयद, ईशा शेख, और उसके बाद शबनम हयात, विकेट कीपर, राइट हैंड बैटर एंड बैटर शबनम। और प्रिंसिपल साहिबा आप तो आगे आए ना, कुछ इनामात आप भी देंगी, आप आगे आए प्लीज। हिना साहिबा आप आगे आइएगा। और उनके बाद सवेरा, सवेरा कम ऑन। सकीना, सकीना आइए। सकीना इनके बाद आप प्लीज। प्रिंसिपल साहब आप आगे जाएं प्लीज, दीजिए। ये आप ही लोगों ने चलाना है, आप ही ने आगे आना है। ये स्कूल्स और कॉलेजेस से चलेगा इंशाल्लाह।
और कोच काजिम साहब तशरीफ लाइएगा। पॉपुलर ग्रुप हमारे इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर भी हैं। और अब आ जाए जी, चैंपियन टीम की बारी है। कौन जीता? पावर गर्ल्स और उनकी कैप्टन जवेरिया रऊफ। कम ऑन जवेरिया। मैडम आप दीजिएगा ये आगे जाके प्लीज। ये जितनी भी हमारी खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हमारी जो हमारी इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात आई हैं, यही हमारा फ्यूचर है। दिस इज द और हम ये ज़ुहैर नसीर साहब, जावेद मियादाद साहब का खास फोकस। और मारिया कहें, मारिया को तो बुलाएं। मारिया मियादाद कहाँ हैं आप? अच्छा कैप्टन इधर खड़ी हुई है। ओके मारिया इधर आनी है आपने। ओके युसरा आमिर, बहुत सारी तालियां बजाइएगा। आज ये खास तौर पे जब इनके वालिद मैदान में उतरते थे ना, तो हम समझते थे अभी जावेद मियादाद खड़े हैं, मैच जीत जाएंगे। और अब जब ये आ गई हैं तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट खड़ी होगी। मारिया जावेद मियादाद के लिए बहुत सारी तालियां। ये बहुत सही तालियां। हाँ ये हमारी सेक्रेटरी आ रही हैं जी। अभी ऐलानात होने शुरू हो गए भैया। आप गेम अच्छा खेल लिया। लाइबा फातिमा, इकरा नईम, मासूमा जाफरी, महक अमीन, फायजा अलवी, रमशा आमिर। उसके बाद तैयारी रखिएगा। वेरी गुड। रमशा आमिर हो गई। ओके मीशा करीम, और उसके बाद लाइबा करीम। अरीजान हसीब, अरीजान हसीब प्लीज आइएगा, आइए। और उसके बाद तैयारी कर लें इनके कोच वसीम खान। ये दोनों इनामात कैश प्राइज ब्रिगेडियर अरफान अख्तर सीईओ एएसएफ फाउंडेशन और उनके साथ मिस्टर शहबाज अली मलिक पॉपुलर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर। इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। इतनी चीजें लाए आपके लिए। और वसीम खान साहब आइए। अच्छा इसमें मिसेस जैन के लिए एक एप्रिसिएशन अवार्ड है। प्लीज आप तशरीफ लाइएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद मियादाद साहब, नासिर हुसैन शाह साहब इनको ये अवार्ड देंगे।
Appreciation Award of Mrs. Zain. मैंने जैसे पहले भी कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी घर पे जियो सुपर पे हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और जो लोग भी मुल्क से बाहर पाकिस्तानी जिन्हें खेलने का मौका प्रोवाइड कर रही है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, हर तरह का मौका, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मिसेस जैन के लिए। हमारे ऑनरेबल गेस्ट के लिए भी बहुत सारे इनामात अभी हमने यहाँ पर रखे हैं, जो प्रिंसिपल साहिबा आई हुई हैं, ज़ेबा शहनाज साहिबा, और ये हम देते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन अलीना के लिए है। अलीना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अब कोई और नहीं, यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का इंपॉर्टेंट इनाम जिसे देने के लिए आते हैं कोई और नहीं, डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, कम ऑन। अलीना, आप आगे आइएगा प्लीज, ये अवार्ड देने के लिए आए, तशरीफ लाएं। और हदील उबैद, कहाँ हैं आप? आ जाएं। अच्छा, चली गई हैं। इनके साथ मैडम आप प्लीज आगे आएंगी, हिना साहिबा आप आगे आइएगा प्लीज, ये हमारे प्रिंसिपल्स ने ये काम करना है, आज ये अवार्ड दिया जाएगा। आप भी आगे हैं, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको फिर कह देता हूँ मैं, आप आगे हैं। आप प्लीज आगे आइए, आप भी आए, सब मिलके देंगे। ये KTPL का आज ये विमेंस लीग का आगाज हो रहा है, तो सब विमेंस मिलके जो है वो आज हमारे डॉन के साथ देंगी। और दो बच्चे हैं हमारे इनमें, और यहां तशरीफ ला रहे हैं इब्राहिम फराज, कम ऑन इब्राहिम। और मोहम्मद शाहजैन, कम ऑन शाहजैन, जल्दी भाग के पहुंचो, तुम तो डॉन के बराबर हो यार। ये दोनों मिलके लें, दोनों मिलके लें, हम दूसरा आपको दे। डॉन दोबारा दो, रिवर्स करो, रिवर्स, डॉन रिवर्स करें। 15 दिन घूमते घूमते बाइक पे आपने रिवर्स गियर खराब तो नहीं कर दिया डॉन? चले, ये सब आप विमेंस की ज़रूरत होगी हमें, ख़ास तौर पे इस इवेंट के लिए। और जो बच्चियां हमारे घर में सुन रही हैं, आपके लिए इंतहाई सेफ एनवायरनमेंट है, आप यहाँ तशरीफ़ लें, आपको एक बेहतरीन माहौल दिखाई देगा। और ये सब लीडर्स खड़े हुए अपने अपने शोबे के, ज़ेबा शहनाज साहिबा, हम मकसद है कि पाकिस्तान में अपना कोई सानी नहीं रखती, एजुकेशन सेक्टर में हिना साहिबा का कोई हमें सानी दिखाई नहीं देता, और जितनी हमारी ख़वातीन हैं आप सब लोगों ने बूस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। आप वापस आइएगा ज़रा, शाह साहब से थोड़ी सी तो बात हो जाए। शाह साहब, कैसा लगा यहाँ आने के बाद, ये जो एक माहौल देखा, एक नया मेला बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, जावेद भाई, जुहैर भाई की कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ने सजा दिया है। जी, KTPL का बहुत ज़बरदस्त हमेशा हर साल शोज़ रहते हैं, और ख़ास तौर पर जुहैर, और फिर जिस तरह जावेद मियांदाद साहब अबव ऑल सबको जिस तरह देखते हैं, और आप सब लोग, इससे बड़ी बच्चों में बहुत हौसला होता है, यहाँ से टैलेंट हंट होता है। और फिर आज जो इन्होंने शुरू किया है, आपा हमारी हैं और इन सब ने मिलके ये जो बच्चियों को आज ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और 84 ममालिक में, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, पूरी टीम को और आपको भी स्पेशली, कि आपने हमेशा इन चीज़ों को प्रमोट किया है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की खवातीन जिंदाबाद। आज आपका दिन है, और जी मैं आया पाकिस्तान अबू धाबी जिंदाबाद, के जिंदाबाद, के जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यहाँ थैंक यू वेरी मच सारी फीमेल्स, आपका बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम, आप सब लोग जो तशरीफ लाए, अलीना और सब लोगों का, मैडम ज़ेबा शहनाज साहिबा, मैडम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वेमेंस क्रिकेट लॉन्च हो गई है, इसके लिए जो है वो अब आप लोगों को पैगाम चला गया होगा, तैयारी करें, आपको सेफ बेहतरीन एनवायरनमेंट में मैचेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी से आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का ग्रैंड फाइनल डीएचए दबंग वर्सेस क्लेफ्टन पॉपुलर अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है, जिसके टॉस पे हम आपको ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद।